all of you can take your seat. We already have our distinguished guests on the dais. Can we all stand up? That's I've already told. I've already informed them. Once again, it says we'll stand up for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you all. Please take your seats. It's my great privilege to welcome you all to this symposium. We celebrate National Constitution Day or the Samvidhan Divas on the 26th of November every year. On this day, in 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India. We have amongst us Honorable Justice Shashikanta Mishra Sir, Dr. Sibasius Giri, Madam Namrata Chadha, Founder of Odisha Positive, Mr. Sanjeev Mahanti. I would request Sanjeev Mahanti Sir to kindly do the honors and Naina and Prithviraj, you can join them there. They are happiness ambassadors. परम ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख सम्पदः द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते. Thank you. Now I request Sanjeev Bhai to kindly welcome our guests. Can we have a round of applause, please?
So you can be here. We can take a picture. With I once again welcome you all to this lovely day, especially when we are standing in 2023, still sitting on a constitution of 1949. A fascinating fact about the Indian constitution is that it was enacted at the time of independence, when India faced enormous challenges, including safeguarding the lives and welfare of millions of people who had been displaced by the partition. In the face of violence and uncertainty, the Constituent Assembly drafted a constitution that reflects the nation's exceptional diversity, spanning languages, races, castes, and classes. 73 years have passed by, isn't it? Yeah. Now we have reached the moon. Don't you think we need to make some amendments, some additions, some alterations to it? Especially the happiness factor? Or to be more precise, the right to happiness? That is missing there. Yes? Okay. We are here to discuss on that and to take it forward. I would like to call upon Mr. Sanjeev Mohanty, founder of Odisha Positive and an advocate at the Supreme Court of India, to take over as the captain of this happiness ship today and throw some light on the subject and its importance and future. Over to you, Sanjeev bhai. आपण मानकु सुप्रभात को चेष्टा करी ओडिया रे कहया किंतु ओडिया इंग्राजी मिसिकी कहया पड़ो कहीं अभ्यास टी कमिगला 31 वर्ष दिल्ली रही ता आगुरी भी ओडिशा बाहर विच्छिन्नांचल जन्म तथापि चेष्टा करुच्ची मातृभाषा मातृभूमि प्रति ममता जहाँ हृदय जन्मी ना ताकू ज्ञानी गुणरी जनिवा अज्ञानी रही कहीं से बंदे उत्कल जननी को प्रणाम। आज भारतर संविधान दिवस रे आपण मानक एटा संविधान दिवस संविधान सचेतनता दिवस भाव में आम एटा को ओडिशा पॉजिटिव गोटे ग्लोबल ओडिया डायस्पोरा परिवार तरफ आपण मानक एठी जति अच्छा प्रेजेंट आमर ग्लोबल ऑडियंस विश्वर कोण अनुकोण लाइव स्ट्रीमिंग रे देखुं से न्यूजीलैंड रे हो सिंगापुर रे हो मालेशिया रे हो यूएस रे हो समस्त को ये देखुं एथि आमको जस्टिस शशिकांत मिश्र ओडिशा हाईकोर्ट रो जज आमर चीफ गेस्ट तांको सार को धन्यवाद करुच्ची आ वेलकम मध्य करुच्ची जेहेतु खूब अल्प सूचना रे मु फर्स्ट टाइम देखली ही इज सो स्पोर्टिंगली एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन इमीडिएट सेम डे ही टोल्ड मी आई विल बी कमिंग सर आपन को आउ थरे मु वेलकम करुच्ची सर। नम्रता चड्डा मैम तांको बरो मु बहुत सुने आई वाज ए ग्रेट फैन ऑफ हर आउ मैम को संगे कथा आली अपार्ट फ्रॉम दैट स्पिरिचुअल से महाबोधि सोसाइटी रे भी अच्छा आपने जानते बुद्धा पर से बही भी लिखिं सो किसी ना कि आमर कस्मिक कनेक्शन रही तेणु मैम को मध्य स्वागत कर सुभाषिष एस गिरी मोर सान भाई एमती दिने बसलु आम राष्ट्रपति भवन कथा होती कि रे मोर बाल रिसीडिंग होची कहती कौन करिया से मत गोटे कहला मंदार फूल भाई लगातु से साजे मंदार गछ मुझे तो आज गोटे सीरियस दिवस संविधान सचेतना दिवस ए मोर स्कूल तीन जन सीरियस सुरेश मिश्र आउ दिलीप चौधरी आउ निहार सप्तती से फाउंडर मेंबर्स आई एम नॉट द फाउंडर I let me clarify, I am not the founder. Odisha Positive was started as a group, Intelligentsia of Odisha. It was first name was Intelligentsia of Odisha. 30th April 2008 रे गोटे WhatsApp ग्रुप आरंभ करथुलु हो भाइराल हो गला तापरे कथा चलला कि कौन दबा सेतरे किछि लोक ऑड कले इंटेलिजेंसिया थटू मु कहली ठीक है ओडिशा पॉजिटिव करिया तापरे आगे कोविड आसला
तो पॉजिटिव जिनसटा को केमती आमे एक्चुअली किछि आमे किछि माने चैरिटेबल कहबिनी हमरा आज्ञा कोन सी रजिस्ट्रेशन नाही बैंक अकाउंट नाही वी आर ए प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल ग्लोबल नेटवर्क परस्पर को हैंड होल्डिंग करूछु गोटे सिनर्जी करूछु काली जदि गोटे ओडिया एंटरप्रेन्योर पाखरे किछि आइडिया अछि वर्चुअल जो वर्ल्ड रे भी आमे ताको कनेक्ट करेबु किए somebody ताको वेंचर फंडिंग करिवो किछि भी करिवो इफ यू हैव ए आइडिया हाउ आइडिया टू एसेट सेटा ओडिशा पॉजिटिव रो लक्ष्य ऑब्जेक्टिव तो एटा आमे कौन सी मु तो बहुत आमे लॉ कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बहुत करचु किंतु ओडिशा पॉजिटिव रो लक्ष्य आभिमुख्य विषय टिके मु कहली कहि दिए कहीं आमर भुवनेश्वर रे एटा जो प्रोग्राम करचु एटा ओडिशा पॉजिटिव रो प्रथम फिजिकल बा हाइब्रिड प्रोग्राम कहया गले कहीं कोविड समय आमर जो आविर्भाव हैला सेतबेले आमे 11टा कंट्री को नेकी कुमारोत्सव करथुलु 31 अगस्त 2020 रे ओडिशा पॉजिटिव जापान ओडिशा पॉजिटिव मलेशिया म्यांमार ऑल दैट 11टा कंट्री एशियन कंट्री आमर प्रथम चैप्टर जे करथिला ओडिशा पॉजिटिव एशियन चैप्टर से माने करथिले तांको भी मु साधुवाद दउची आमर वेबसाइट भी आमे लॉन्च करथुलु एटा टिके एबे आमे रिकंस्ट्रक्ट करचु ताको पुणी आउ थरे पुनर्जीवन दबु टिके बहुत मेंबरशिप बढ़ी गलानी टिके क्रैश करी गला तो आमे ताको टिके टेक्निकल ये करके ताको रिवैम्प करचु तो वी हैव सोशल मीडिया पेज वी हैव बेसिकली आमर सोशल मीडिया रे बहुत लोक जानिचंती आमर लॉट्स मेनी पीपल आमे भुवनेश्वर बा ओडिशा रे जंती मून लैंडिंग हला चंद्रायन हला एटा भुवनेश्वर यान करचु अछि तो भुवनेश्वर लोक जानिया दरकार ओडिशा पॉजिटिव वर्ल्ड ओवर जानी गले अरे भुवनेश्वर लोक जानिया कथा नहीं तो तेणु से एटे गोटे भुवनेश्वर में भाइलु करूँ कौन सी गोटे कज इनको नहीं करूँ से आज विशेष दिवस रे ओडिशा पॉजिटिव को आम कहलु ना भुवनेश्वर लैंडिंग करिया ता छड़ा ये जो संविधान सचेतनता आम दिवस करचु आज करूँ तापर काली भूल जीवु मु कहया चाहूँ काली मु आसती भूलीगली अरे मु संविधान बेयर एक्टा सार जानते मु कार्य कर पारे तुम आनच तो मु कहली खाली ये लाइब्रेरी खोलला बेलू मत मिललानी मु कहली आम भेनी रे करचु के मुनसिंग हॉल रे करचु भारतीय विद्याभवन लाइब्रेरी रे मु नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करी जदि भी कर्माकता था 10टा कॉपी आई विल स्पॉन्सर बाय एंड गिव टू देयर लाइब्रेरी डोनेट फ्रॉम ओडिशा पॉजिटिव सबुस्तर स्टूडेंट मानू गोटे कैप्सूल प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशन विषय देवा कथा से मैनेजमेंट स्टूडेंट हो जो भी कोर्स हो लाइक भगवत गीता कुरान होली बाइबल कॉन्स्टिट्यूशन समस्त घरे रहा कथा सचेतनता बहुत बड़ दरकार आम PIL फाइल करूँ पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन लोग कहीकि खराब करदे आमर कॉन्स्टिट्यूशन सार जानते 226 पावर 32 आर्टिकल 32 sir is a part of that process constitutional court he is a constitutional judge he can speak better मु से ताको टच करिविनी ओनली मोर हैप्पीनेस जमती हमर रिसेंट गोटे मूवी रिलीज होती समस्त जानते माई स्वीट हाउस वाइफ मु कहली जमती कथा पड़ुला गोटे वर्ल्ड प्रीमियर करिया मु कहली बिल्कुल करिया ओडिशा पॉजिटिव हैप्पी टू डू इट किंतु आमे ताको आरंभ करिया को दिन 26 नवेम्बर कॉन्स्टिट्यूशन सहित हैप्पीनेस को केनि जोड़िया से मैंने आम हैप्पीनेस इनभाइटर तांको नयना दास पीतिराज शतपथी को भी स्वागत करुच्ची मु अन्य मान सहित तो मु आउ मु गोटे जिनस कहबी मु इट इज अ कोइंसिडेंस दैट इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएस रे मु 4 जुलाई 2013 रे यूएस रे थिली मु सेठी देखली सेठी किछि सभा समिति होनी बट से माने सचेतन बेसी से पुलिस के ट्रैफिक लाइट नथिबो किंतु समस्ते मानचंती लॉ इज आमर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कंट्री रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नाही किंतु सचेतनता अच्छी आमको जदि संविधान किसी अधिकार देछि किसी दायित्व भी देछि तो हैप्पीनेस वर्डटा आम चाहूँ एक्सप्रेसली जमी मुझे कहबी कंट्रोवर्सी को जीविनी कहीं दीटा वर्ड 76 आमेंडमेंट रे आसिला ओरिजिनली प्रियम्बल नथिला बट आर्टिकल 21 कैन बी एनलार्ज तार स्कोप कैन बी एनलार्ज राइट टू लाइफ इज राइट टू डिग्निफाइड लाइफ तो संविधान रे जो स्पिरिट ऑफ द संविधान जदि से नहीं
ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ହି କ୍ୟାନ୍ ପାସ୍ ଏ ଜଜମେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ହି କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍, ଜଜେସ୍ ସ୍ପିକ୍ସ ଥ୍ରୁ ଦେୟାର ଜଜମେଣ୍ଟସ୍। ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପିଲ୍ କରିବି ସାର୍ଙ୍କୁ ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିବେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼। ଆମର ଏଠି ଯେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବି କରିବୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିବ ରାଇଟ୍ ଟୁ ହ୍ୟାପିନେସ୍। ଏଇଟା ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ଆମର ନୟନା ଦାସ ପିତିରାଜ ତାଙ୍କୁ ସେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମର ପବ୍ଲିସିଟି ଯେଉଁଠି କରିବେ ସେଠି ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବେ, ସମ୍ବିଧାନ ସଚେତନତା। ତାପରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଅଲ୍ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ, ସବୁଠି ଲ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲସ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ। Thank you, Sanjeev bhai. You set us all on this happiness journey. It was quite motivating. I really feel when you told that Constitution is the mother of all law, so it really gives me goosebumps that we don't know so many things about it, right? Okay. Now I would like to share a quote on happiness, which is very, very close to my heart. It goes like this: happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn, or consumed. I repeat, happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn, or consumed. It's the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude. Now I would like to call on stage Ms. Naina Das and Mr. Prithviraj Satpathy, our happiness ambassadors, whose recent film, My Sweet Housewife, is all about happiness and mental health. The film showcases that amidst the chaos in life, we must prioritize on ourselves and our mental well-being. Naina and Prithviraj, please. And I would like our guests to kindly appreciate their work which they have done. At such young age, they could think of mental health and happiness. They are producer also. Yeah, they are the producers. They are actors. The film is doing good, and it's more of an awareness campaign. Yeah. मैम को कमीशन I will say I am very mean woman. I will say only my part. Nana. Sad to be sad. It is a pleasure giving a award to Why are we so cautious about clapping? Thank you. The main heroes of any event are the audience. So if you are not happy, we are not happy either. Can we have a happiness clap? So if you allow me, yeah. No, it goes like this. It goes like this. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Thank you. Thank you. Naina and Prithviraj, why don't you accompany the guests and sign the happiness can? But it will take up before. No, at least the people who are the guests who are on the dais. Please, if you could request them and take them. Chandana, please. Sir, ଟିକେ বেশি উপর তଳ କରୁଛୁ. Request all, and you can say just 2 lines, 3 lines. Smruti, so Smruti Didi, There is certain composition. We will do. Okay. Smruti Didi, Except him. let's Naina speak two words, and she will request all to. No, okay, sir. If sir will not go, it's fine. No, The rest- he has certain protocol to follow. Done. I'm okay. Actually, Smriti, it is like that. We will sign, and we are giving to sir. It is. Yes. Yeah, it is fine protocol. It's fine. Yeah, Naina.
समस्त को नमस्कार मंचासीन अतिथि वृंद को मोर नमस्कार माई स्वीट हाउस वाइफ टीम तरफ नमस्कार सामने उपस्थित थिबा सब गुरुजन मानक गुणी मानक एवं ऑडियंस को नमस्कार स्पेशल थैंक्स टू स्मृति दीदी एंड संजीव सर फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल एंड वेरी मेमोरेबल स्पेशल डे जार तुलना नहीं एक्चुअली आम बहुत जगह को अतिथि हिसाब रे जाऊ बहुत जगार एमती आमको फूल मिले गछ मिले सब मिले किंतु ए जगार महात्म्य ए प्रोग्राम रो इम्पोर्टेंस एठी उपस्थित थिबा सब गुरुजन माने बा अतिथि वृंदंकर उपस्थिति एवं तांका पाखरु ए फूल आ ए छोट उपहारटे पाइबा आम पाई गोटे बहुत बड़ कथा थैंक यू सो मच एवरीवन and thank you so much to this forum for considering us as happiness ambassadors गोटे कथा कहबी आम सिनेमाटे करूँ जार ना हूँ माई स्वीट हाउस वाइफ समस्त को मोर आंतरिक अनुरोध आम टीम तरफ मु आ प्रीतिराज सतपथी दिज मिसिके सिनेमाटी को प्रोड्यूस भी करें जो मेन लीड कैरेक्टर अच्छा दिज मेल आ फीमेल ताकू आम पोर्ट्रे करूँ ए सिनेमार गोटे अस्तित्व होया सर मु अनुरोध करी समस्त उपस्थिति एथिपाई कारण ये सिनेमा रे जो रुद्र कैरेक्टर टी प्रीतिराज सतपथी करिसंती ए धरा पृष्ठ रे थिबा प्रत्येक पुरुष निजको पाइबे से चरित्र रे एंड मु जो चरित्र टी करिछि अपर्णा आम सोसाइटी रे थिबा प्रत्येक नारी निजको से चरित्र रे पाइबे 4टी 5टी पॉइंट रे हमर सिनेमा टी सीमित मु खाली से 5टी पॉइंट कहबी जदि मो पाखे 2 मिनिट अछि आम टीम तरफ रु जितेबाला जड़े नारी आपण लाइफ रे आछि डोंट ट्रीट हर एज अ जीरो बिकॉज शी इज अ ग्रोन अप नाउ बाल्य विवाह करके आसुना जे आप जहाँ कहे जमती कहे तार मेंटल ग्रोथ हो सारी तार गोटे रनवे हो सारी तार गोटे पाथ हो सारी शी हैज अ ड्रीम एंड शी हैज अ पाथ टू वॉक सो डोंट ट्रीट हर एज अ जीरो सेकेंड एवरी पर्सन हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी से पुरुष हो कि नारी प्रत्येक जिनस को देखिबार नजरिया समस्तंकर अलगा परस्पर नजरिया को जदि आम सम्मान दबा आउ खाली सम्मान देले चलबनी मुझे प्रथम थर आज कहूँ कारण जिते थर मुझे स्टेटमेंटा कहूँ मो निज भीतर गोटे रियलाइजेशन आसिलानी पर्सनल लाइफ को लेकिन परस्पर परसेप्शन को खाली सम्मान देले हुएनी परस्पर परसेप्शन को बुझापी भी परस्पर पाखक आसिकी से सिचुएशन टाक जज करवा निहाती जरूरी सो आम कहीचु जे यू आर राइट एंड आई एम राइट दैट इज द बिगेस्ट रॉन्ग सो टू मेक द सिचुएशन राइट यू हैव टू बी इन ईच अदर शू सेटा आमर पॉइंट नंबर 2 जोटा सिनेमा आम कहीचु थर्ड वी हैव ट्राइड टू शो दैट इवन अ वुमन हैज एन एक्सपेक्टेशन शी हैज अ ड्रीम एंड शी हैज लिटिल टाइनी हैप्पीनेस से गुपचुप खाइबारे भी पूरा हो पारे से आइसक्रीम खाइबारे पूरा हो पारे बा स्वामी संगे मेला जीवारे भी पूरा हो पारे बापा घर को जीवारे भी पूरा हो पारे सो ताको सम्मान जणेबा बा ताको बुझीबाटा निहाती आमर आवश्यक तो ए फोरम रे संजीव भाई आ स्मृति दीदी आ सर मैडम समस्त उपस्थित रे मैं अनुरोध करी जदि आपण माने समस्त जो माने उपस्थित अछंती आ जो माने भी आज नाहंती जदि आसी पारे आमे जदि काली आज तो ऑलरेडी 450 शो अच्छी आ 1 o'clock शो अच्छी आमर रिगालिया रे सेटा हेई पारिबो कि नहीं मु जानिनी जदि आमे ऑफिशियली काली गोटे कोनोसी शो को बुक करिबा जोठी आपण माने अगेन यू ऑल विल बी देयर एज आवर चीफ गेस्ट एंड आमर जेतिकी एठी अछंती आमर अतिथिवृंद समस्ते जदि ये जो आमर ओडिशा पॉजिटिव ग्रुप अच्छी प्रेजेंट हो पारे गोटे शो रे आम मीडिया रो प्रेजेंस भी अरेंज करवा और यहाँ गोटे मेसेज जीव दैट वी आर जस्ट नॉट द हैप्पीनेस ब्रांड एम्बेसडर वी ऑल्सो मेक श्योर दैट इट इज पुट इन टू एक्शन एंड द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग एंड वॉचिंग द मूवी एंड मेकिंग श्योर दैट द वर्ड ऑफ माउथ इज स्प्रेड इन द सोसाइटी फॉर द बेस्ट ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ सो एतिकी अनुरोध करके विदाय नेबी आपण मानक पाखरो थैंक यू सो वेरी मच नमस्कार So I'm the screen husband. Yeah, I'm the screen husband. So thank you, ma'am, for giving me this opportunity. First of all, कि एठी जे तो अग्निदेव अछंती मो अंतर प्रार्थना करी अग्निदेव को पाखरे जे समस्त भितर जो प्रकार खल मनोवृत्ति बा कौन सेमती किसी चिंताधारा मंद चिंताधारा अच्छी ताको दूर करतु महाज्वलाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् मैम बेले बेले मो स्कूल रे मो पाठ पढ़ला बेले मोर गोटे सांगटे थिला पावा ता ना
स्पीच देवाई पड़े जो इंडिपेंडेंस डे आसे कौन स्पीच देवाक पड़े से सब पचरे बस थाए सार ताको क्लास को डाकिले बहुत पचरे आसे से भॉइसलेस हो जाए और से लास्ट को कहे जे समस्ते तो सबकि कही सारी मुझे कौन कहि जय हिंद तो मुझे बेले बेले से पावाटी मो भीतर आसे मत बेस किसी कहार ना सो आई एम रियली ऑनर्ड आई एम ग्लैड आई एम हैप्पी आई एम स्पीचलेस टू दिस फोरम जमती संजीव भाई कहले जे समस्त घरे पाठ पढ़ंतु कि न पढ़ंतु पाठ पढ़ंतु कि न पढ़ंतु समस्त घरे एटलिस्ट समस्त हाथ में गीता भली गोटे कन्स्टिट्यूशनल लॉर जो बुकटी अच्छी सेटा रहिबा निहाती दरकार जमती कि मु बंसी बजाऊँगी मु बजे संसार पर बजाऊनी मु बजाऊँगी मो मो हाथ में से बंसीटी अच्छी मु खुशी पाऊँगी आई वांटेड टू बी ए वॉलीबॉल प्लेयर आई वांटेड टू बी स्पोर्ट्स पर्सन मोर इंजुरी आसला बट मु वॉलीबॉल खेली पारे सत बॉल टी मो पाखे रखार असुविधा कौन अच्छी सो आई एम कीपिंग दैट बॉल विथ मी सो लाइक दैट आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ओडिशा पॉजिटिव आज जदि आमको ये हैप्पीनेस ब्रांड अंबासाडर बोली डिक्लेयर करते डिग्निटरीज सामने आपण मान सामने सो मु मोर अंतर कथा ये कहि हैप्पीनेस जो सक्सीड करे लीड करे इट गोज टू ब्लिसफुल स्टेज सो डेफिनेटली नेना ऑन मी विल ट्राई कि ए हैप्पीनेस जोटा अच्छी ओडिशा पॉजिटिव हैप्पीनेस सेटा गोटे ब्लिसफुल स्टेज को जीव सो नैना को विषय तो बेस किसी कहीपरि ना आई एम ऑलवेज स्पीचलेस अबाउट हर सी सो सो मुझे पानी बोटलटा हुए कवरटा सो सी इज द वाटर इनसाइड एंड थैंक्स टू ऑल एंड स्पेशली थैंक्स टू सुकुमार भाई वेयर आर यू सुकुमार भाई लव यू फॉर योर all the supports and all thanks to all Sanjeev bhai and one more thing one more thing we are really sorry for the situation Dr. Sivashish Giri was there आमे तांको रिक्वेस्ट करिथिलु पर्सनल जाइकरी आसीबा पे फिल्म हॉल रे सर भी आसीथिले सेदना मु भी सेठी प्रेजेंट थिली बट सिचुएशन एमती कोन हे गेला आई डोंट नो बट मु भी थिली सर भी थिले सर हमको पाई नाथि कि मु सर को पाई पारनी मे भी पिक्चर स्टार्ट हो जाइतला अंदर फिल्म हिट होची कोलाहळ so we are really sorry for that sir but I was there but I kari pari nahi so thank you all and thanks to this time आगे हाउसवाइफ एटा संपूर्ण ओडिया पिक्चर आगे बिल्कुल मन से क्वेश्चन आस्ते आगे आगे तार दुईटी कथा अच्छी मैम जमी आम आजिका डेट्रे चेयर कौचे टेबुल कौचे से गोटे माई स्वीट हाउसवाइफ कथा भी अच्छी जेहेतु आम ग्लोबाली एटा पहुँचापी चाहिलु तेणुक माई स्वीट हाउसवाइफ जय संजीव सर कहले जो स्पीच आरंभ है जे अनेक वर्षर बाहर रही मातृभाषा मोर सब भक्ति सम्मान अच्छी किंतु भूल रे जदि पार्टी इंग्लिश बाहर जीव क्षमा करेंगे यहाँ से उद्देश्य बनाई आपण ऑफिसर्स क्लब को जानतु भुवनेश्वर क्लब को जानतु कटक क्लब को जानतु गल्फ क्लब को जानतु कौन सी कॉर्पोरेट ऑफिस को जानतु जदि जड़े बड़ ऑफिसर स्त्री घरे अच्छा ही वुड लव टू से मीट माय हाउसवाइफ माय स्वीट हाउसवाइफ सो से तथ्य को लेकिन से एटीट्यूड टाको प्रेजेंट करके आमे कहिछु माय स्वीट हाउसवाइफ बट आमे जस्टिफाई करिनु ताको आमे तारो भरपूर तर्क रखिछु सिनेमा रे आपण देखिले जानिबे एंड मु आउ गोटे कथा आज्ञा एंड आउ गोटे कथा मुझे कहवाई चाहिए जेहेतु आम आज मुझे सहीटा ही कहवाई जाऊँगी जे इट्स द मूवी इज ऑल अबाउट द फील सो दैट आप जो हॉल को जी आम 50% टॉकी रखी 50% फिल्ड अच्छी सो यू प्लीज कम एंड वाच एंड जिते आम ये मूवीटा तैयारी करूँ आमको जना नाला जे सीटा हाउस वाइफ नुह होम मेकर बोलिकी गोटे कोर्टे चली तो आमको जना नाला एंड आम मूवी इज ऑल अबाउट दैट जे सी इज द लेडी द कैरेक्टर लीड कैरेक्टर अपर्णा इज फाइटिंग फॉर एवरीवन जो व्हाई आई एम ए स्वीट हाउसवाइफ जस्ट इट्स so okay and thank you very much Smruti Didi for your kind words can we all have the signature there please Sanjay bhai Dr. Giri Namrata ma'am please Sanjay bhai
Sonalisa ma'am, why don't you come and sign it? Sushant, why don't you come and sign it? निहार सर आपण आसिक साइन कर परिवे आज्ञा Thank you. ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆଗରୁ କରିବେ Thank you. Thank you. Thank you all. As we embark on this happiness journey, I would like to quote something which is very special because it's being said by none other than our own Bapu. He says, happiness is when what you think, what you say, what you do are in harmony. I repeat, happiness is when what you think, what you say, what you do are in harmony. Is it not the duty of the state to secure happiness to its citizen and not merely equality, liberty or fraternity alone as set in our constitution? In other words, should happiness not be a primordial manifesto of state formation and other values like equality, liberty, fraternity, economic well-being and rule of law being contributory factors? If so, why does not happiness find a place in the preamble to our constitution? Or, in other words, in the directive principles of state policy? Why are we not having happiness there? Why can't we fight for right to happiness? Amongst us, on the dais, we have a speaker, Madam Namrata Chadha. I think everybody in the audience would be knowing her because she's a warrior. Madam ko anusare Odisha ra garbo. जहाँ को प्रति क्षण जितेबले जहाँ जो ओडिया नारी असुविधा किसी प्रॉब्लम इवन मत फोन कले मुझे नम्रता मैडम को नियो नंबर नियो नम्रता मैडम को कथा हुआ सो शी इज एक्सेसिबल टू अस मोर देन अ पुलिस और अ जुडिशियरी आई एम सॉरी इफ आई एम यूजिंग दिस वर्ड्स बट येस extrajudicial, yes, you can say that. She is an ex-member of State Women's Commission, Odisha. She is the spokesperson of Women Empowerment and Gender Equality. She is the president of Madhyam. It's a national level organization working for female prisoners' right and their welfare. She has more than 25 years of experience in advocacy with the government in policy formulation for projects pertaining to women and children. I would request her to share her thoughts on should there be a right to happiness or not. Over to you, ma'am. Jai Jagannath. Thank you, Smriti, for this very humble and beautiful introduction because wherever we go, samaste kahanti Namrata madam ho se gote chandi.
से आसी घर ऐसे गंडगोल लगेवाई. सो फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्ड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. I am more thankful to Advocate Sanjeev Mahanti ji, who has given me this opportunity that today we are celebrating, this is not only the Constitution Day of India, but it is a kind of, he is creating a awareness. Thank you very much. And mu aji pratham thoro ko pai dekha heli Shibashish महोदय को सातरे गोटे ओडिया पुओ बाहर जाइकी केवल मात्र ओडिशार ना करनी सारा पृथ्वी रे केमिति गोटे साइंस रे विज्ञान रे सब जिनस रे से गोटे कंट्रीब्यूट करि पारिबे सारा पृथ्वी रे से बहुत बढ़िया काम करूचंती. प्रभु जगन्नाथ को अशेष अशेष आशीर्वाद आपण को ऊपर थाउ. एंड सर्वोपरि हमरो हाईकोर्ट रो उच्च न्यायालय रो जो मान्यवर विचारपति महोदय अछंती आम सातरे आज मुख्य अतिथि हिसाब रे आपण माने तांको मुख्य अतिथि हिसाब रे जानि छंती. मु कहिबी नारी रो मनरो कथाटा जोटा समस्ते कहती जे नारी ही बुझी पारंती सेटा भूल. से गोटे ओडिया रे बही लिखी छंती जशोधारिणी जशोधरा. सेटा जदि आपण पढ़िबे देखिबे मु भी विमेन्स इन बुद्धिस्ट इरा रे बहुत गुड़े लिटरेचर रे बही लिखी किंतु जेते बड़े मु तांकर बही ओडिया रु हिंदी रे ट्रांसलेशन करूची बेले बेले एमती हुए 2-3टा लाइन मु लिखिबी आर आखिरे माने गोटे पानी भरी जीव जे ए प्रकार रे भी जशोधरा निज मन रे से चिंता करूथिले से इत्ते सुंदर भाव रे लिखी चंती. एंड सर आई एम वेरी रियली थैंकफुल टू यू दैट यू हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसलेट दिस. एंड आई एम आस्किंग ऑल द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग ओवर हियर, ऑल द सीनियर मेंबर जो मैंने एठी बसी छंती समस्ते से बही अच्छी मार्केट रे से को पब्लिकेशन रे मु कहि देबी आपण माने निश्चय पढंतु. Amazon रे अवेलेबल अच्छी आर हबो जदि आपण गोटे दिटा बही एठी भी डोनेट करंतु विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संगरे एठी भी. आ जो माने एठी सामने रे बसी छंती समस्त को मोर प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम. मु जते बेडे ए सभा को आसीली आई विल कम टू दैट. मते लागिला मु गोटे शोक सभा रे आसी छी. समस्ते भारी गंभीर भारी सीरियस कोन ना कोन गोटे हबो को सभा हबो. एंड थैंक्स टू स्मृति से जिते बड़े नोट चेंज करदेला जे हैप्पीनेस क्लैपिंग करवा गोटे खुशी रे हबा. आमे गोटे दाबी करूछु जे संविधान रो प्रेम्बल रे हैप्पीनेस काहे कि इंक्लूड करा होनी. आमे निजे भी हैप्पी नुह जदि आमे निजे जो जिनसटा रही पारुनु आमे केमिति ता पई दाबी करि परिबा. एटा होची प्रथम शर्त आम लाइफ रे. जो जिनस पई आमे निजे प्रस्तुत होउनो, जो जिनस रे हमको खुशी होउनी, आमे पूरा ईर्षा रे मरी जाउछु. जणे के आसीला काहे कि से एमती के आसिले काहे कि हेले से काहे कि मोठू ऊपर पोर्शन रे अछंती उपरोक्त अधिकारी अछंती मु काहे कि नाही. आमे तो इत्ते जेलस रे अछु आमे खुशी तो हे पारुनो आर आमे कहूछु सरकार आम पाई देश आम पाई राष्ट्र आम पाई आमर संविधान रे से आनंद से खुशी को रखंतु. तो सर्वोपरि आगे आमको आनंद रे रहिबा को पड़िबो. देन आई विल कम आमर गोटे पाली रे अछि. इट इज फॉर यू मैडम. आपण कहिले ना ओडिया रे कहंतु से पई ए पाली रो दिटा लाइन मो कहि दउची. अविद्या सम तिमिर नथी आओ पनसम आभा नथी. माने अविद्या सेटा पाली भाषा रे कुआ है व्हेन यू डोंट हैव अ नॉलेज इग्नोरेंस तार पाई अंधार नाही. जदि आम पाखरे से नॉलेज नाही नॉलेज आमे भाबुछु आजिकल कोन सर इट इज अबाउट द डिग्री. We are law graduate, post law or PhD, we are scientists, we have a degree of this and that, or whether it is in yoga, whether it's in a science or art. It is not. It is about knowledge. आपण को निजो प्रति निजर समाज प्रति निजर राष्ट्र प्रति ए सब सारा पृथ्वी प्रति ब्रह्मांड प्रति जदि आपण को किछि नॉलेज नाही ताहले आपण पूरा अंधारे भटकुचंती. अविद्या सम तिमिर नथी एंड पन सब आभा नथी. माने पन जो पर्यंत आपण को भातरे विद्या पड़ी आसी नॉलेज आसी तार प्रति आओ लाइट नहीं. वेदर वी हैव अ डिग्री और नॉट, वी हैव अ प्रॉपर डिग्री, वी आर एकेडमियंस और नॉट, दैट इज नॉट ए क्वेश्चन. क्वेश्चन इज दैट व्हेन यू डोंट हैव दैट नॉलेज विद इन योरसेल्फ. आमे कॉन्स्टिट्यूशन रो बही पढ़ी कि माने जदि पढ़ी भी दबु व्हाट विल हैपन. आमे जदि ताको अंगे निबउनो आमे जदि ताको इंटरनलाइज करूनो आमे कहिबा वी ऑल आर इक्वल इन इंडिया जोटा होची प्रिम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. द फर्स्ट वी द पीपल ऑफ इंडिया. इट इज नॉट यू एंड मी, इट इज वी समस्ते इररिस्पेक्टिव ऑफ अवर कास्ट अवर क्लास अवर क्रीड अवर सेक्स. किंतु आपण आज भी जते बेडे जाउछंती देखुछंती आपण को घरे सफाई कर्मचारी आसुची
आपण ताको निज घर रो ग्लास रे गोटे पानी देई पारु नाहंती दउछंती कि नेवर यू डू दिस प्रैक्टिस ओनली थैंक्स टू कोरोना people are saying corona was very bad I am saying thanks to corona taught us many things corona रे समस्त लोक काम बंद कर देले सफाई कर्मचारी माने रास्ता रे बुली बुली की काम करिले तारपरे आमे सिखिलु तांको आमे टिके फुल्लो दबु ताली मारिबु ए करिवो किंतु कोरोना सरी गला आज भी आमे गुटे सफाई कर्मचारी को निज घर निज कप रे गुटे कप चाहाटी देई पारुनु एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी and where there is no equality there is no happiness I am telling you if we demand something we have to prepare for that first whatever we have in a constitution Sanjeev babu we have to practice that it is not about je ame gote amku sabu jinso milibo आपण जानी नाहंती constitution रो जो स्मृति बहुत सुंदर पूरा कहिले constitution हमरो गुटे दिन रे हेनी it is a long exercise of 8 years 47 परे भी हेनी 49 रे जते बडे से माने कमिटी तांको प्रपोज करिले इन मंथ ऑफ अक्टोबर तापर जाय कि 1950 रे जाय कि कॉन्स्टिट्यूशन हमरो आसिला मो सामना रे जोटा स्थापित होला तो इट इज अ लॉन्ग एक्सरसाइज व्हाई देयर इज नो हैप्पीनेस बिकॉज इट बोर्न आउट ऑफ हार्टरनेस कॉन्स्टिट्यूशन ता एमिति आमे कहू न जते बेले गोटे गर्भवती महिलाटी हे जे महिलाटी कोन करिवो सुंदर गीत सुनिबो ठाकुरन को भजन सुनिबो गोटे आध्यात्मिक जिनस शुणिबा आमे कहू ना गोटे गर्भवती महिला को जे तुम शिशुटी भी सेमिति हो when the child is I am talking about all the female when they are pregnant whether they are Muslim they are Hindu they are Christians there is only one demand from all community member अरे तमे मनटा खुशी रखिबो तमे मनटा खुशी रखिबो भलो गीत सुनिबो शिशु उपरे से प्रभाव पड़िबो and constitution is a child of division हार्टरनेस परस्पर को कट्टा कट्टी होना होना करी कि जदि इट इज अ बंगाल राइट्स और द डिवीजन ऑफ बंगभंग और वेदर इट इज अ पंजाब लाहौर और पाकिस्तान डिवीजन सो इट बॉर्न आउट ऑफ दैट टाइम और आप में केमिति करि परिबा सेही समय रे सही सब जिंस रे आमे गोटे आनंद जोटे खुशी जोटा भगवान बुद्ध कहिचंती सेही जिंसटो को आमे केमिति आशा करि परिबा यस इट इज ऑलवेज देयर नाउ वी हैव क्रॉस दैट इरा आमे बहुत वर्ष हो गला सेटा गोटे स्मृति रे रही जाइछि को लेखा रे को सिनेमा रे आमे काम हा देखु छु सेही सब जिंसो नाउ वी कैन डिमांड फॉर दैट एंड आई एम टेलिंग यू द वी कैन ओनली नाउ देयर आर सो मेनी इरेगुलरिटीज इन इंडियन सिस्टम एग्जीक्यूटिव होन तो पॉलिटिशियन होन तो व्हाटएवर किंतु आज भी जदि हम देश रे गोटे होप अछि आज भी गोटे आशा अछि दैट इज वी कैन rely on the Indian judicial system and we are very proud of that whenever we demand that what we want for our betterment आमे जिते बेले भी देइछु से जिंसटा को और जुडिशियल रे कॉम्प्लेक्स रो कॉम्प्लिकेटेड केसेस गुडा भी बहुत सुंदर भाव रे जजमेंट आसी जो जगह रे आमे प्रैक्टिस आपण भावंतु आजी जुग रे being a woman I am telling you we are talking about we have a right to equal work equal remuneration equal right women are working at work field and they are the what I am saying the victim of sexual harassment and we need a law to prevent sexual harassment at workplace 2013 आम घरे बुढ़ा बापा माँ अच्छी स्त्री अच्छी ताकू आमे बाड़ेबुनी गाड़ी करिबुनी तार पाई हमर गोटे आईन है शास्त्री सर भलो से कहिबे PWDV एक्ट 2005 डोंट यू थिंक वी आर सो अनसिविलाइज सोसाइटी जो देश रे जिते अधिक मात्रा रे आईन आसीबो जिते अधिक मात्रा रे लेजिस्लेशन हबो दैट कंट्री इज मोर अनसिविलाइज्ड डू यू थिंक फॉर ईच एंड एवरी आम बापा माँ को सम्मान करिबा पाई से माने केमिति सम्मान सह बंचिबे वी नीड व्हाट मेंटेनेंस एक्ट फॉर ओल्ड एज पेरेंट्स डू यू थिंक मो स्त्री को मो गाली देबिनी सम्मान देबी ए जिंसो को जणाइबा पाई एटा हमर प्रैक्टिस रे नाही किंतु आमे जते बेडे सप्तपदी रे जाउछु जते बेडे बाघर होउछु से सब हमर अछि कॉन्स्टिट्यूशन रो आवश्यकता नाही ऑल द व्हाट वी आर कहंती जो को हिंदी रे कहंती वादा we are giving to प्रतिश्रुति प्रथम each other को हमें दोचु परस्पर को but we are not practicing it that is वादा ना तोड़ो वही तोड़ना है सबने तो that's why there is a law ना then we need for this for each and everything we need a one legislation हमें कहू जो महिला मानक को पाई आईन रो व्यवस्था हो निरुपमा दीदी जो कहिले सब जिंस पाई आईन रो व्यवस्था काहे की हबो
when we demand for each and everything, it means we are very very uncivilized. ଆମର ତ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି वसुधा एव कुटुंबकम, that is the UN is saying. magna carta रे जो कहले, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन रे कहले, this is nothing, this is a totally copy from the संस्कृत. ଆମର ନିଜର ପରମ୍ପରାରୁ ଆମର ନିଜର जो ରହିଛି वसुधा एव कुटुंबकम, ସେଥୁରୁ ଆମେ ନେଇଛୁ. We cannot be happy because we never learn to give others happiness. That is the problem. We never want to give a happiness to anyone. आमे सब बड़े निज खुशी, मो हेबी, मोर छुआ, मोर स्वामी, स्वामी कहबो मो स्त्री, मो घर, मोर संपत्ति, मो केमती आगो को बढ़ीबी. We never give anything to anyone. That's why we can't be happy. And we are, when asking about the happiness, एटा हमको राष्ट्र रे जदी देई भी दबो, आमे जदी एटा आमे दबो. गोटे मु ऐड करछि. Yes. Why can't we have a ministry of happiness? Madhya Pradesh, they already have a ministry of happiness. And it will solve your problem. No, solve not. It will Create awareness. Yes. Yeah, definitely. That's why I'm telling you, know, for everything हमको खुशी रहिबा पाई भी गोटे मिनिस्ट्री रो आवश्यकता अछि. हाँ, तापर से मिनिस्ट्री रे देखिबे जो महिलाटी मिनिस्टर थिबो ता स्वामी सतरे बाड़िया पिटा हेइथिबे, हमें टीवी रे देखिबो. Then we will talk about the ministry of happiness. माने सब एठी होउची, माने हमरो एठी हैप्पीनेस रो अछि, हमरो WCD डिपार्टमेंट अछि, हमरो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट अछि ना. तथापि आपण देखुथिबे केते जण जारो आखि नाही कि बा चाली पारु नाहंती, से निजरो गोटे आई कार्ड पाई कितने डिपार्टमेंट रे चक्कर कटौछंती. This is the reality. That's why I'm telling you, you have to don't preach anything, you have to do practice. The moment we will start practicing all those things, जोटा संजीव भाई पूर्वरु कहले, बहुत देश रे आईन नाही, संविधान भी नाही, किंतु they are practicing and we are not practicing that. That is the problem. And that's why we are demanding. Yes, we are demanding, and I do welcome this step, and I am with you, Odisha Positive, that they have taken this initiative, wonderful initiative, and we are a part of that. We feel very proud. But I am telling you one thing, all positive things are not always good. आमे कहूँ ना, be positive, समस्ते हों तो not always. HIV positive is good. समस्ते डरे के पड़ेबे, रिपोर्ट आसो तमरा HIV positive अच्छी. So all, don't think blindly, don't use your brain, don't think blindly that this thing is okay, say कहूँ छोटी, that is good, we will follow that. No, don't do that. सबु जिनसो भलो नाई. First you start from yourself. Start from your own home. Start that practice. Ajit transgender माने they are in a very high position. संजीव जी, I am telling you. आपण सुनी थिबे जो मीरा परिडा साधना मनकर सखा ग्रुप 15 years back से माने मो घर को आसुथिले, तांको के पचारू नथिला, ए किन्नर, ए हिजरा, ए केमती हबो. आम घरे आज भी से सेमिति मो घरे आसिकी सोफारे बसिकी चा पिउछंती 15 वर्ष पूर्वरु भी. एबे से माने बड़ पोजीशन को गले के एमएलए लड़ीबे के बोर्ड रो चेयरमैन हेले, से मते आज भी मां कहि के डाकंती. दैट इज नॉट बिकॉज आई हैव गिवन समथिंग टू देम और दे हैव गिवन समथिंग टू मी. दैट इज द म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन रेस. दैट यस, आई एम रिस्पेक्टिंग यू as you are and they are respecting me as I am. So you have to start mutually respecting each other. When you start respecting each other, happiness automatically will come. When you start giving, सेटा जत्ते बड़े आपण गिविंग दबा को आरंभ करिवे, that the joy of giving जोटा दलाई लामा कहि चंती, and that is very very important. मु कोहुनी धन दियंतु, कोहुनी पैसा दियंतु, समय दियंतु, whatever you have, your emotions. Even आपण कोर्ट रे भी सर अछंती भल्लो से बुझेबे, they never say case रे, case listening, it is a hearing. Hearing means patience hearing. You are के कष्ट रे अछि जदि patience hearing भी दउछंती, that is also a sign of giving and that is also create a happiness. So that is very very important. When we learn to give something, that is very very important for them. And might be happiness index ray, that is also a very wrong idea, universal, that they have put a happiness index. कहा पाकरे गाड़ी अच्छी, घर अच्छी, चाकरी अच्छी, ये अच्छी, health system अच्छी, सब अच्छी, and those countries are in the number 1, 2, 3, 4, 5, 6 less crime, they are very very happy. That is a wrong. गोटे खरा दिन रे गोटे मुलियाटी काम करिकी आसिकी पखाड़ खाइकी सोइबो, he is the most happiest person in this world.
सेटा हैप्पीनेस इंडेक्स को आसीबोनी सेटा केबे भी काउंट हबोनी बिकॉज पीपल दे डू नॉट नो व्हाट इज हैप्पीनेस स्त्री लोक को आम कहूँ आम नारी माने कहती नारी जागरण हो स्वाधीनता हो व्हाट यू थिंक आप दिन सारा बुलिबे घिरी घिरी की दिन सारा बुलिबे घर को आसबे क्या आपण को उत्तर दबार ना रात 12टारे आसतु 2टारे आसतु के आपण को कपे चाह दबा पाइबे ना निजे बनइबे कॉफी निजे पीबे डू यू थिंक दिस इज अ हैप्पीनेस दिस इज अ फ्रीडम नो सो when you are coming home somebody is waiting for you somebody is asking for you that is a happiness it gives smile on your face apno bahar asile ya ma kichi khaicho puo kichi khaicho that is a mother's happiness that giving that care that love so universal index re that chapter is not there so now Smriti is standing behind me she is giving a signal the madam it is too much now going to stop and I don't go to disturb her because she's a very very sweet lady and it give me so much of happiness to be here and for a cause this symposium has we need interval doses one day hele setai ha so that's why I'm telling you we are with Odisha positively we will be there and whatever we need from the drafting and giving to governor then to president to have include this happiness in our preamble that is very very important and we will work on that all the academicians all the people from the different state of life all my dear students and निश्चित जो माने এই सबु प्राइवेट एरिया रे माने पब्लिक एरिया रे नाहंती गृहिणी माने अछंती जो माने अछंती जो माने पुरुष अछंती पान दुकान भी करिसंती आमे तांको भी व्यू नबा अवेयर करबा एंड आई थिंक संजीव महांती सर जी विल निश्चित एई सबु काम रे नेबे एंड वी विल हेल्प देम ऑल और मु जगन्नाथ प्रभु को पाखरे प्रार्थना करिबी जे आपण समस्त को खुशी रे रखंतु आनंद रे रखंतु जय भारत वंदे उत्कल जननी अरे वाह okay thank you Namrata ma'am I still remember almost 15 years back when we had gone to OTV studio it was something about sexual harassment and people out there I think Manoranjan Mishra was there doing the program and बापरे स्मृति मैडम और नम्रता मैडम माने मैम जहाँ इंट्रोडक्शन ने कहले इट वाज लाइक चंडी माने कुआडे आसले राइट ओके इट वाज ऑन अ लाइटर नोट बट यस मैम जहाँ कहले मैम मु टिके टिके ओडिया पसुची टिके आपण खुशी हेबे बदे आई मीन आई जस्ट वांट टू गिव यू हैप्पीनेस आपण माने नहीं नहीं आई नॉट टेल दैट ना ना मु टिके भी ओडिया कहूची पूरा तो कहि परिबेनी चेष्टा करूची हाँ ठीक अच्छे ओके ना ना आमर जो गोटे हिंदी सिनेमा रे गोटे गीत थिला प्यार बांटते चलो आमे लेट अस प्ले नाउ खुशी बांटते चलो राइट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मैम फॉर सच इंस्पायरिंग vibrating energetic speech of hers. She said that actions should speak louder than words. Yes. She said equality should be preached and practiced simultaneously. We are just preaching. We are not practicing it. So we should start doing it. She said the only hope we have is we are proud of our judicial system. Yes, we Indians are proud of our judicial system. I think we should clap for this, that yes, we are proud. As we take it forward, we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by the Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Our Constitution, though acclaimed to be one of the finest in the world, appallingly lacks many of the extended concepts of individual liberties for true pursuit of happiness. We drafted our Constitution taking a cue from
American and other constitutions of the world, but failed to take note of pursuit of happiness as a goal to be achieved in governance. True that the preamble declares that we, I think you must be knowing it, the preamble declares that we, the people of India, constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic to secure its citizens, among other things, liberty, equality and fraternity. But we fail to proclaim in our document of governance that the ultimate constitutional goal is pursuit to happiness. Scientists have found that the three things that make people happy are pleasure, that's doing things you enjoy, engagement, feeling interested in your activities and connected to others, meaning, feeling that what you do matters. To clarify all the above, we have our next speaker, Dr. Subhashis Giri, who has joined us all the way from Germany. He is an expert in endogenous stem cell research and therapy, specializing in the identification and reactivation of local stem cells of the skin, hair, liver, heart and brain. I think heart and brain always leads to happiness. When they are in sync, it leads to happiness. Also here also. Not exactly, it's for some people. Would request Dr. Giri to help us in identifying the power of our brain for our health and the noble and magic things for a happy, healthy and long life. Over to you, Dr. Giri. Thank you. Thank you. Jai Jagannath. Sir, Sasikanta sir, pranam. Madam, pranam. Apan ko pranam. So bodo man ko pranam. Au sangaman ko namaskar. आज मु दी तीनटा गप कहबी तुम पाखर आंसर चाहिए है धर जा आमको जंगल रे गोटे हाथी भालू देखा भल लगे ना चिड़ियाखाना भल लगे समस्ते को आंसर दियो जंगल रे समस्ते ऑब्वियसली आउ चिड़ियाखाना तुम जो जिनसा देखी से बहुत जल्दी भूली जीव आउ थोड़े भी देखी जंगल ना बुढ़ा हाला पर्यटन कह ना मुझे जिते गप हाथी बाघ कथा आसो अरे मुझे जंगल से मुझे देखी जाऊला सेपटे अधा देखी लांजटा देखिली लांजटा बंका करता ये कह भूलनी के तेज साइंस को जीवा मुझे 40 नोबेल प्राइज विनर संगे बहुत समय बीतई पाखर गोटे जिनस मुझे शिखी से कहती 95% लोक रंग वे जाती 5% लोक एजुकेटेड आमे जो डिग्री नौ बड़ बड़ यूनिवर्सिटी बड़ बड़ एजुकेटेड दे आर टेलिंग मी शिवाशिष वी आर नॉट एजुकेटेड तार उदाहरण मु दौची आखिर जो छोट छोट जिनस गुड़ा शिखिकी एबे मु डायबिटिक्स लोक ठीक करिछि विथ साइंस मु गोटे स्टेम सेल्स कहले आप भावुवे नॉर्मल माने जेमती वर्ल्ड रो करंती आमे टोटाली अलगा करू आम ऊपर हसुले एबे सब आम पाखु एबे जदि टीवी स्क्रिप्ट देखिबे 15 वर्ष पुराना कथा मु जो कथा कही सत्य होइछि एबे तबे सही जो गप को जीवा तेणु आमे चिड़ियाखाना जेमती चली से भाया चिड़ियाखाना 50 थर देखिले से खुशी आसबनी तुमको तो मु जो हैप्पीनेस कहते ना मिनिस्ट्री हैप्पीनेस किसी करवा दरकार नहीं तुम सॉल्यूशन गोटे कहबी जोटा भी जापान और जर्मनी रे शिखी जोटा कि जो जिनसा जब इम्प्लीमेंट करवा हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिक आसीज इकोनॉमिक तो मैजिक बेले आसीज क्राइम भी उड़ीज सब ठीक हो तार गोटे मंत्र अच्छी मुझे लास्ट से जंगल को जीवा धरा जो भल लगे तेणु आम से जो जंगल रे केमती एनिमल देखा से भाई आम लाइफ को करवा तापर कथा तापर आंसर क्वेश्चन है धरा जा आम जंगल रे अच्छु हठात बाघटा आसला कौन करेंगे बसी थे ना दौड़े दौड़ा वी डोंट नीड एनी मेडिसिन फॉर दैट वी नीड नथिंग फॉर दैट और जो जीवन में जिते स्पीड दौड़ न से स्पीड तुम दौड़ी पार कारण है वी हैव सबकॉन्शियस माइंड जोटा कहते ब्रेन कहते जहाँ भी कहतु केते साइंटिस्ट कहतु कनेक्शन फ्रॉम द सोल केते साइंटिस्ट कहती गीता बहुत जिन कहते किंतु से जो 95% ब्रेन आम कहीं यूज करूनु दैट इज गारंटेड इट इज मेटा एनालिसिस हैव डन
सकाळू उठुच गाधल पूजा कल ट्यूशन गल गल ऑफिस को काम कर संध्या बेला आसिल तो आम जो मु जो 6000 फैमिली गाइडलाइन अच्छी एडवाइजर अच्छी डिजीज मोस्ट ऑफ द डिजीज गो वे विदाउट एनी मेडिसिन आमको यही 4 वर्ष लोक जानुंट तो कहीं दौड़ी पारे एत स्पीड माने ब्लड आसला एत स्पीड कहीं आसला आम आगु आमर सबकनसीयस माइंड ना सी ऑटोमेटिक ऑन हो जाए से कंडीशन से किंतु से जिनसा जदि दैनंदिन जीवन में तुम जो यूटिलाइज कर हैप्पी तो आसो या आसो आम कौन हलु जोटा मुझे रिमेम्बर जोटा कहली कि आम एजुकेटेड होनु आम किए कहीदेला जंगल राजा किए 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 कहला किए कहला कौट शुणीच सोसाइटी रू दे आर रॉन्ग दीटा कुकुर मारी दियंती सिंह को सिंहटा कि टाइगरटा छुआ बेले ता माँ पाखे घूरी बुलुव टिके बड़ हेले टिके शक्तिशाली हुए तापर बुढ़ा हो जाए गोटे कुकुर भी सिंह को मारी गोटे हाथी शुंड्र बुड़े दी फोपाड़ी देसी आम सिमिली पाड़ में बहुत छोट बेले देखी हूँ तेणु सी केमती राजा हम आम कौच सी भी जानी सी राजा कि नहीं से भाया हजार हजार एग्जाम्पल अच्छी तेणु आम सी कहीदेला लायनटा राजा एवं देखिए मुवी गुड़ा बनाऊँ टाइगर टाइगर मारी पिटिके 16 वर्ष बचे हुआ टाइगर तेणु दिस नॉट एजुकेटेड आमको सोसाइटी कल्चर सोसाइटी आमको पूरा कदली दिखते मांकड़ को कदली दब ना से कदली को दीटा कथा खुशी हो तुम्हें गोटे जिनस कर कि कदली बर्षिब पैसा जब बहुत सारा राइटर मैंने लिखिं तुम पैसा रख पठेब निजे कि आण जो दरकार तेणु तुमको कदली देखिए भूलाऊँ समस्ते तुम्हें जो दिन तुम्हें निज से जो सबकनसीयस माइंड टाक मुझे सहीटा जो तुम ओपनिंग कर सोसाइटी तो जल्दी कहीं सका उठिल किए भजन लगे दी किए सीरियल लगे दी किए सका उठ गीत शुणव किए सका उठ घंटी धर पूजा कर मना करनी तेणु तुम्हें दिने जदि गोटे घंटा तुम्हें गायब होबार चाहिए माने से कहीं नुह यही जो हैप्पीनेस कथाटा जो क्राइम आसना कहीं कौन जानते आम जदि छोट छोट छुआ मानू से जदि बिजी करदेबा जे कौन जिते गुंडा हो जिते बड़ क्राइम हो ताकू सी कौटा चाहे से भीतर जिनसा जो बिजी करदेबा से करनी केबे काम करेनि केबे क्राइम काम करेनि इट्स ए जर्मन एंड जापान मॉडल मो मेंबर अच्छी आम प्रत्येक वर्ष चेंज करूँ ये प्रोजेक्टा बंद हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हम आम देश में सीटा शिखबार अच्छी से मुझे सब बेले कहूँ गवर्नमेंट भी लिखुची एवं मत बहुत सपोर्ट कर छुआ मान मत कहते माने पिला माने आपण माने बहुत सपोर्ट करुँच तेणु ये भाया करवा तेणु आमको एडमिट करने पड़ो कि आम कौ मिस्टेक गुड़ा करुचु हैप्पी ऑटोमेटिक आसो धरा जा मुझे तुमको खाली कहीदेवा खाली छुट्टी अच्छी कौन कर एमटी बेरे जानी समस्ते खराब तुमको जी बिजी करदेवी जा जा जाको राग भी मारुव ना मन भी आसबनी तुमको आ जब खाली बसी गल मो सांग मैंने कम से कम 70-80 जन दे आर आईएएस ऑफिसर दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक्स सिवास लाइफ इज बोरिंग 5 वर्ष मजा लगेगा बढ़िया बाहागर है धूमधाम है 5 वर्ष पर वी आर बोरिंग मुझे जानी आम पढ़ुला बेले 2टा झील छाड़ी पड़े एयर हॉस्टेज होते से डिपार्टमेंट एंट्री कले मुझे देखी केमती वेलकम होता पूरा धूमधाम माने जमी गोटे अफसर गुड़ा आसुँच कही तुम्हें बहुत भल कम कर दे लव द साइंस पर कांदी कांदी से जो आसिले तेणु तुम्हें ही खोजी बाहर कर मोर पाखे प्रेजेंटेशन अच्छी मुझे देखई पारुनी गोटे ब्रेन चित्र अच्छी से ब्रेन चित्रटा खोलाई से जन सीढ़ी उठुची से ब्रेन को तो से जो ब्रेनटा जब तुम ना है से सीढ़ी भी तुम्हें ही चढ़ बापा माँ भाई भौणी भगवान कहीं चढ़े कहीं चढ़ी पारे तुम्हें ही गौतम बुद्ध कहीं मंदिर को जाते से गछ तले बसते मुझे भी जो 3-4टा डिस्कवर करी जोटा कि आज वर्ल्ड मत सैल्यूट करुच्ची समय कह 4 वर्ष तो होती जो गुड़ा कि डायबिटीज ठीक है जो मानकर हेयर प्रिवेंशन होती हेयर रिग्रोथ होती मुझे से कथा जदि समय टी बेसी मिल तो जदि तुम्हें जापर तुम गोटे गीत देखुच आफ्रिका लोक मैंने जो गीत गुड़ा लिखिं तुम बुझीपारनि कि तो उठिक नाचब कहीं आम लिखिपारनु
जर्मनी रे BMW जोटा कहूछ बवरियन मोटर वर्क्स एटा गोटे गोटे डिस्ट्रिक्ट रो गोटे सोसाइटी गोटे कम्युनिटी दे डोंट नो इंग्लिश तो से माने जो शिखिले फंडामेंटल एट हलारे एमती हला मिसिकी से मैंने जो जिनिस इंजिन बनाऊँ सारे दुनिया को बिकुंट एबे भी लोक को जर्मनी में देखी से मैंने कहती आम चाहूलु जहाज बसिक इंडिया को पलैबा तेणु मो कहवा कथा कि तुम निजे भाव तुम निजे ही खोजिक बाहर कर सोसाइटी गवर्नमेंट या गोटे प्लाटफर्म बनइब एक्सप्लोर और रेस्पेक्ट करने आम देखिए स्कूल माने जो माने कम नंबर आसे जो माने को टिके कम नंबर आसे से एक्सपेक्ट करूनु आ जो मान फास्ट हुए मेडिकल इंजीनियर एत सम्मान दो तक ऊपर उड़े देव आम आते भी मेडिकल साइंस कि हिस्ट्री फिजिक्स जिते भी सब न्यू न्यू इन्वेंशन ना से लेजी फेल स्टूडेंट मैंने ही करिसेंती तुम देखिबो जिते भी कहीं से रेस्पेक्ट कले मनोबल देकी से मैंने आहरी मात्रा बढ़े आम देश में कहीं पारुनी आम देश में मुझे सब कहे जो मिस्टेक जाना दरकार आम देश में से जिनसा जी आसब आम लोक पिला मानकर ब्रेन जो जो हीराटा भितर अच्छी से बाहर करवा जर्मनी रे साइंस एक्जिबिशन हुए आम ट्रेनिंग दो छुआ मान बुलेबू से 6टा राति 2टा पर्यंत हुए यहाँ भल लगुच कि पैसा खर्च हुए से हाथ में कम करेंगे 3 घंटा तापर से ब्रेन रे पशिगला तेणु सी शिखे से प्रथम प्रैक्टिकल करती तापर मिस्टेक हेले थ्योरी पढ़ती यूएस इंग्लैंड एमने आमर आमर जो टेक्नोलोजी से ध्वंस कर देते लैंग्वेज को लेकिन से ही कहती तेणु आम जदि से जिनसा निजे बाहर करवा कौन करें आम खुशी हाँ आउ सोसाइटी को सम्मान देवाई पड़ो जड़े गीत लिखुची आउ जो फुटबॉल खेल जर्मनी जो फुटबॉल खेलती ना से पाठ पढ़ती से फुटबॉल खेलती छुआ 8 क्लास 9 क्लास फुटबॉल से खेलती और बहुत बढ़िया खेलती इंजीनियर से डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे से लेखालुखी करेंगे नहीं कि लंबा 2 पेज 3 पेज सीधा प्रैक्टिकल करेंगे तापर जोटा मिस्टेक हम यहाँ पढ़े लिखे देखो BMW बुलेट प्रूफ ये जो रैंकिंग सिस्टम आम करूँ गोटे रैंकिंग किए कह समस्त कहते पेरेंट्स ये फास्ट रैंकिंग ये जर्मनी दे डोंट केयर अबाउट रैंकिंग जो तुम जान थो जो मार्सिडीज इंजन डिस्कवर है बुलेट प्रूफ काच वाला जो गोटे जो कन्फोकल माइक्रोस्कोपी आम यूज करुचे हॉस्पिटल रे कहीं जानी ना माइक्रोकोट की बहुत गोटे गोटे स्मॉल सिटी से दे डोंट केयर रैंकिंग सिस्टमटा गोटे गोटे फ्रॉड एटा हमको ठकांती रैंकिंग करी जदि रैंकिंग सिस्टम अच्छी कहीं जर्मन इंस्टीट्यूट रैंकिंग को आणुना जर्मनी रे गोटे सिटी अच्छी 35 जन नोबेल प्राइज पाई से सिटी को गोटिंग के जीव मोर कहबार अर्थ कि यही बसिकी भी आम तुम्हें किसी कर सोसाइटी रेस्पेक्ट कर जो मैंने कि कम नंबर आणुंट सम्मान दियो बहुत सम्मान दियो हिस्ट्री को देख तेणु ये जिनसा करवा आउ गोटे देखु आम जो हैप्पी कथाटा कहते ना हैप्पीनेस आउ टे साइंस को जीवा डोपामाइन जान डोपामाइन सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन डोपामाइन माने टिके भीतर को जीवा गोटे बैगण पोड़ा जो खाइब जोटा तुम मन पसंद खाइबा जोटा कि खाइले मुहरे लाल आसी जाए सेठी भी डोपामाइन सिक्रेशन हुए और सिगरेट भी सिगरेट हुए आजिकल जो चिप्स गुड़ा होची मार्केट रे से मैंने 3टा एग्जांपल देवी जो मार्केट सिगरेट हो एडिक्टेड हो से मैंने कौन करती एक्सपेरिमेंट करती चिप्स कथा से मैंने एटी रखी थे बढ़िया खाद्य रेबिट रेट्र और सेठी रखी थे सल्ट और सम केमिकल्स मूसाटा एटी टिके जदि गला तापर सेठी गला कहे दिस इज नॉट करेक्ट मेक इट मोर मूसाटा सेठी दौड़ो एटी टिके भी इंचे भी जीवनी कम स्पीड न आहरी टिके दियो पूरा देखला मात्र दौड़िकी जीव रकेट भाया देखो ठीक यहीटा चिप्स पकाओ दिस इज द रियालिटी दे आर यूजिंग आस सबू सबू परफ्यूम गोटे हुए परफ्यूम आम जो यूज करे लीगली अलाउड टू हाइड द केमिकल्स लीगली अलाउड कोई कहीं तुमको कहीं कंप्लेन करें कहीं व्हाई इन परफ्यूम इज द मेन आम जो ब्रीथ कौन ऑक्सीजन नौचे से ऑक्सीजन को से भांगी दिए ओ कर दिए ब्रेस्ट कैंसर नंबर बढ़ुचे से जिते बड़े कोरोना थिला से मत सांग मैंने पैसा मांगिले कहले शिवाशीष
some donate money ମାନେ some money donate ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଇସା ଦେବିନି ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ବହୁତ ଏମିତି କହିଲେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ଇମେଲ୍ ବି କଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଜଣେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି 2019ରେ ସିଏ ମୋର ବହୁତ ସିନିୟର କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସିଏ କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଇ ରେଲରେ ବହୁତ କାମ କରିଛୁ ସିଏ କହିଲେ ଆଉ ଟ୍ରୁ ସିଏ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ବେଶୀ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବ ବେଶୀ ସାଇକ୍ଲିଂ କରିବ ହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗୋଟେ ଆଡାପ୍ଟିବିଲିଟି ଅଛି ଯେଉଁଟା HI1 ଆଲଫା ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେନ୍ସିଂ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ବଡ଼ିରେ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ଯଦି ତୁମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛ ସେ କରୋନା ଆସୁ କରୋନାର ଭାଇ ଆସୁ ଭଉଣୀ ଆସୁ ଯିଏ ଆସୁ କି କରୋନାର ଯେତେ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ିର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ତୁମର ବଡ଼ିରେ ଅଛି ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ ଲଙ୍ଗସକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନୋବେଲ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫ୍ କରନ୍ତି ବସି ରୁହନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଚେର ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଚେୟାରରେ କିଛି କାମ କରନ୍ତିନି ତାଙ୍କୁ ସିଲିଣ୍ଡର ହିଁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତେଣୁ ତୁମେ ସେଇଟା ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି ତୁମେ ଫ୍ରିରେ ସେଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କରିବ ମୋତେ କରୋନା ହେଇନି ମୁଁ କେତେ ପଏଣ୍ଟ ସାନ୍ ମାରିଛି କରୋନା ସାଙ୍ଗରେ ଘଣ୍ଟା ପିତିଛି ମୋତେ ହେଇନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିପାରିବେ ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି ଦେଖିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେନ୍ସିଂ ପଢ଼ିଦେବ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେଖିବ ଜାଣିପାରିବ ତେଣୁ ସେଇଟା କର ଆସୁ କରୋନା ଭଳିଆ କେତେ ଭାଇରସ୍ ମୁଁ ଦୁଇ ହାତରେ କାମ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କରୋନା କିଛି ନୁହଁ ରାଇନୋ ଭାଇରସ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିତନା ସବୁ ଭାଇରସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମିଲେଟ୍ କରନ୍ତି ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା କି ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ 90% ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ଏବେ ମୋତେ ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ବଡ଼ ଲିଡର ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ଟିଭ ଆକ୍ଟିଭ ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସତ କଥା ଗୋଟେ IIMରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା ଗତକାଲି ସେ ସବୁବେଳେ କହିଲେ WHO ବୋଲେ ହୁ ଇଜ୍ WHO ଲେଟ୍ସ ମେକ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେଲ୍ଥ IHO ସେନେ କାହିଁକି WHO କହିବ ତୁମେ 40 ମିଲିଗ୍ରାମ ଆଲୁମିନିୟମ ଖାଇପାରିବ ବହୁତ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ସେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ସ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରେ ମୁଁ ଦେବି ଖାଇବେ 40 ଗ୍ରାମ ଆଲୁମିନିୟମ ଯେଉଁଟା ଲୁଣରେ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟା ସଫା ଲୁଣରେ ଖାଉଛେ ଆମେ ଆଜିକାଲି କାହିଁକି ଥାଇରଏଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ଭ ହେଇନି 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଲୁଣରେ ମିଶାଇକି କାହିଁକି ଆଣ୍ଠୁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି କାହିଁକି ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି 8-9ଟା ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଫ୍ରିରେ ତୁମେ ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ ଆଡାପ୍ଟ କରିଦେବ ନା କିଛି ଡିଜିଜ୍ ହେବନି 18,000 ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ 95 ଇୟର୍ସ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ 22 ବର୍ଷ ଯାଇଛି ଜାପାନ ମାନେ ଜାପାନ ଜର୍ମାନୀ ରଷିଆ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁମାନେ 90-95 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ କହିବେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଲା ଖୁସି ଆଉ ଖୁସିଟା କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର ବ୍ଲଡ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଦରକାର ଆମ ବଡ଼ିରେ ବ୍ଲଡ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ କେତେ ଲେଭେଲ୍ ହୁଏ ଜାଣିଛ ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ରକେଟ୍ ଶୁଣିଥିବ ସିଏ ବି ଆମ ବଡ଼ିରେ 65,000 miles per less than 1 second blood circulation हुए रॉकेट रु 1000 गुण स्पीड रे ब्लड सर्कुलेशन आम बॉडी रे हुए मो स्लाइड न नले मु देखाई दी थांदी आमे कोन करूचे से ब्लड भितरे एटे सब जमा जाउची से चिप्स खाउचो जत्ते सब खाउचो दिल्ली रे गोटे तरकारी बना होची आसुची एठिकी मु नाम नेबिनी तुमे सेटा गरम करी भिंडी मसाला आल पालक पनीर एका खाऊची तुम कोटी कोटी टका प्रॉफिट कर जड़े क्षीर बनाऊँगी से क्षीरटा 25 दिन रोची मु चैलेंज मु निजे टेस्ट करी मु निज पकेट्र पैसा नहीं कि मो संगे डिबेट करूँ मो पाखे डाटा अच्छी तेणु एगुड़ा पॉइजन ये हम तेणु हैप्पीटा केमती ब्लड सर्कुलेशन करते सब 18,000 लोकंर मो जूस तुम मान जेनेरेशन कौच ब्लड सर्कुलेशन कर गोड़ हलैले कहे लक्ष्मी छाड़ी गोड़ हलैवा कथा इट इज ए बायोलॉजिकल रिएक्शन गोड़ ऑटोमेटिक हलवा चाहे बॉडी जिते बड़े आ गोटे लास्ट एग्जांपल देखिए मुझे कहि गोड़ जदि आप सीट्रे कम कर गोड़ हलैले कम करूँ तुम्हें बहुत माने बैक पेन ये हम तेणु जिते पारुच गोड़ हलाओ बहुत सारा हैबिट अच्छी कहे लक्ष्मी छाड़ी जी कहे लक्ष्मी छाड़ लक्ष्मी आसे हेल्थ भी भल आसे गोटे एग्जांपल होता इट्स ट्रू इट इज स्पॉन्टानियस आउ गोटे होता मो सांगटा गोटे थिला सी कहला आई हैव राइट टू ब्रीथ द ऑक्सीजन नोबडी कैन पुट सम क्लोथ्स ऑन माय नोज सो यूरोप रे जर्मनी रे तो टिके चला बुझी गले मुटे सपोर्ट करे पलाण गला बेले जेल रे पुराई देले मोर कलिग को सी कहले मते जेल दे दियो फांसी दे दियो आई हैव राइट टू ब्रीथ द फ्री एयर आई एम ह्यूमन नोबडी पुट तापर मु से जॉर्ज मु तापर मु चिट्ठी लिखिली गोटे आ गोटे आम गोटे मूवी भी बनैबू डॉक्यूमेंटरी मु कहि लिखिकी देली मु जानिनी सर लीगल लैंग्वेज किछि मु कहली सर आपण जदि
से जगार था कहि वी नीड ऑक्सीजन जदि जने डीप निद्रा सुई थबो ता मुहर जदि मु गोटे मास्क लगे देबी से जॉर्ज हो से जो जे कोनोसी हो सिटीजन हो सी ता हाथटा ऑटोमेटिक जीव फोपाड़ी दबो डू एक्सपेरिमेंट सर देन मेक ए डिसीजन एक्चुअली कहीं डीप निदर थी गोटे मुहर पर्दा गोटे बांध देवी से फिंगी दब करिक निजे देखिबो कहीं आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन 1931 रे प्रोफेसर ऑटो जर्मन रे कहिथिले तुम जदि ऑक्सीजन ब्रीथ करिक नब ए परफ्यूम वाला ऑक्सीजन नहीं डीओ वाला ऑक्सीजन नहीं जदि नेचुरल ऑक्सीजन नब तबे तुमको कैंसर हबनी आ जदि नॉन ऑक्सीजन नबनी तुमको कैंसर हबो घर भितर ऑक्सीजन नहीं जिम को जीवे जिम रे ऑक्सीजन नहीं मो पाखे इंस्ट्रूमेंट अछि जिम रे गाधोइबो स्विमिंग पूल रे माछ गोटा छाड़ी देबो 2 घंटा पर मरी जीवो माछ गोटा गोटे गोटे माछ जदि बंची न पारे डिजर्व ऑक्सीजन न थाए आम देहरे छोट छोट छिद्र थाए बुधवार दिन मो देहटा ऑरेंज स्ट्रॉबेरी बासे मो दी जण जाकू कन्सल्टेंसी करथिली अमेरिका रे जीती थिले से माने देह सुंगिया गोटे कंपटीशन हुए अमेरिका रे एटा भी मु 12 वर्ष किछि क्षेत्र अछि तार बायोलॉजी मो कहवा कथा कि तुम ब्लड सर्कुलेशंस करबो खुशी आनिबो खुशी जानिछो कोन खुशीटा खुशी साइंस को जीवो खाली लिखि देले कोड मेंबरशिप क्लास नहीं गले हुए नहीं खुशी निजको ब्रेन को यूटिलाइज करिवो मैनेजमेंट गोटे निर्जीव वस्तुटा तुम कंट्रोल कर गोटे चिप्सटा कंट्रोल कर गोटे पिज्जाटा कंट्रोल कर तुमको गोटे निर्जीव वस्तुटा तेणु निर्जीव वस्तु तुम कंट्रोल करुछि तेबे भाभी पारो तमे किए अरे तमे कंट्रोल करो तमे सुपर पावर ब्रेन टाको ओपन करो मु निजे केमिति मु डायबिटीज मान को ठीक करिछि छोट छोट जिंस हेयर पई गोटे जो फॉर्मूला मु डेवलपमेंट करिछि आज पर्यंत केही मते बीट करि पार नांती एबे वर्ष 1.5 वर्ष हला लोकंकर चुट्टी बाहरुछि सार भी पचारुथिले ए जिनसटा चुट्टी कोन चुट्टी रे मु से जो समस्त बहुत मेडिसिन डेवलपमेंट मु कहली चुट्टी तोड़ाटा सफा करिवि आम बॉडी सबले मन रखिथबो आम बॉडी 92% जानी बॉडी केमती हिल हम जिते सब बड़ बड़ डॉक्टर जिते बड़ बड़ हॉस्पिटल आम 8% बेसी कहीं जानिनु केमती बॉडी हिल करे कहीं जानिनी मु भाविली कि चलो आम तो गुटे गुटे चुट्टी गुटे गछ संगे संपर्क करवा से केमती तलटा सफा हम हेले मे भी रिग्रोथ हम टीम गठन कली इट बिग सक्सेस माने एबे तुम जदि कहब स्किन भी स्किनटा तो आगु करी स्किन डाणिंब चोपा सांगे गोटे जर्जियार प्रोबायोटिक मिसई तेणु डाणिंब सब होलग्रेन कह कि होलग्रेन कहीं खाऊन डाणिंब चोपाटा फोपाड़ दूच मुझे से छोट ब्रेनटा को यूज कली मुझे लेट से डाणिंबर और डाणिंब चोपार गोटे एक्सपेरिमेंट कली अराउंड 20 लाख रुपये खर्च होता मो जो फाउंडर तार जन्मदिन बहुत बढ़िया सी मत कह शिवासी से मैजिक मैन के 2टा फर्मुला करी से माने कहला लेट्स फंडिंग मैंने सांगे सांगे विदिन 1 मिनिट एक्सपेरिमेंट करली 40% हाई एफिशिएंसी जोटा कि जानिब चुपाटा कम फोपाड़ कहीं से तुम मन आसलानी कारण है तुम्हें भावुन तुम्हें खाली से गोटे जिन भावुच से जमी मांकड़ को कदली दिखते कदली मिलगला सरीगला चाकरी गोटे मिलगला सरीगला काम सल प्रॉब्लम से दिन टू स्टार्ट हुए क्राइम भी हैप्पीनेस भी सबू 2 वर्ष खुशी हे ना केते वर्ष बाहर गल 2.5 वर्ष खुशी हे 3 वर्ष खुशी हे तापर बोर लगे पूरा बोर लगे माने क्या पछे तुम लगिज ना कुछ एमटी दिमाग में आउ ता पछे लगिज ना क्रिकेट विषय से गोटे कथा को 1000 थर कहूब जो तुम भी खराब ताप भी खराब से क्रिकेट जीतल ये जो डोपामाइन बेस्ट को आस 2टा एग्जांपल देखिए मुझे कथा ये करी डोपामाइन सिगरेट स्मेल भी बैगण पोड़ा खाइले भी हुए बैगण पोड़ा खाइले तुम्हें डोपामाइन एतकी सिक्रेशन हम है टिके डीप को जाओ तापर से कह डन यू गेट प्लेजर रिलैक्स सिगरेट चिप्स ई सिगरेट एटसेट्रा पिज्जा से एक्सपेरिमेंट कर तुमको पूरा आकाश को उड़े देला उल्लेबार पद्धति से कहबनी जे दिन काचड़ी होकर पड़े मुझे गाँवली भाषा यूज कर आई एम फ्रॉम विलेज से जो ऊपर काचड़ी होकर पड़ो से ब्रेन गुड़ा सेल्स गुड़ा डैमेज हो जाए स्ट्रोक हुए से इंद्र चंद्र कहीं मानवनी से तुम जब जो एडिक्टेड अच्छे क्या कथा से झगड़ाटा से स्टार्ट हुए हैप्पीनेसटा से जीरो हो जाए तेणु ये जिन गुड़ा करने दियो एगुड़ा बंद कर निर्जीव वस्तुटा तुमको कंट्रोल करुच्ची तेणु युवा जो तुम जो दिन तुम ब्लड सर्कुलेशन कर जिते पारुच गोटे गोटे जिते सफा करुच बर्तन ये सार्ट पैंट गोटे निंबूटा पकई दौच तुम भीम बार कह ये कह कहीं पकाच निंबूटा पकई कुची कुची सार्ट आगे कर कहीं कुचुले से बोटे कुच
बॉडीटा सफा कर बॉडीटा क्लीन कर बॉडी आम देखिए बहुत लास्ट एग्जांपल मैडम गोटे गोटे स्ट्रेस हुए गोटे आम सेपट मैंने बहुत केस जो तुम सब भल खाऊ भल ब्रीथ करूब सब भल करूब जदि तुम स्ट्रेसटा को ब्रेन रखीदेल सी तुमको 3-4 मिनट डैमेज करदेव से जब बेसी समय रहा तुमको कैंसर भी हो तेणु तुम्हें दुनिया को चेंज कर मैंने बॉडी रेंट्रे मिली चेक इन चेकआउट दिन हे मेंटेनेंस कर तेणु ये जिनसा शिख तुम्हें तु शिखा दरकार केवे शिख जे दिन तुम्हें गोटे घंटा तुम्हें आखि खोलिके मेडिटेशन कर गछ तले मेडिटेशन कर से कहारी को नियनि देखिए तुम जीवन में गीत भी लिखिपार एक्टिंग भी कर बड़ बड़ प्रॉब्लम सल्व कर बड़ बड़ डिस्कवरी कर मुझे तो चाहूँ इंडिया नोबेल प्राइज बनू तेणु आम गाँ गाँ स्कूल स्कूल जाकि कहूँ पिलामानकर जो हीराटा छुपी आम ताको बाहर करवा आ बहुत एग्जांपल अच्छी आउ दिन के मुझे कह समय नेबिनी आउ केवे सुजोग मिले मुझे कहि बहुत एक्सपीरियंस थैंक यू Thank you, Dr. Giri. Madam is very happy. Dr. Giri पूरा उड़िया रे कहले. हाँ बुझुची madam. बुझुची. Actually, we are running short of time. Our chief guest will get late if we go on talking. I mean, this is a never-ending. Happiness is a never-ending story. आज्ञा? Next back on the script, please. आज्ञा. No, sir, Okay, now Dr. Giri just spoke about, we'll come to you. Dr. Giri just spoke about power of subconscious mind. He spoke from one perspective. Me as a trainer, from another perspective, we say that whatever our subconscious mind works from the time we are born till we finally rest in peace. From the moment you are born till we finally rest in peace. So whatever we feed into our subconscious mind, it goes on repeating on and on and on. So let us feed happiness into our subconscious mind, and you see what miracles happen in your life. Hope you would agree, Dr. Giri, with me that if we feed happiness into our subconscious mind, we can be happy. And Sanjay Bhai can help us further with the right to happiness. Okay. Thank you, sir. Thank you once again. Happiness includes a host of variables like environmental protection, rule of law, I repeat, rule of law, corruption-free administration, right to habitation, minimum guarantee of decent pay structure. These words sound a bit legal. We have some legal experts here. Yeah. An express incorporation of pursuit of happiness as legislative purpose in our constitution would give ample ammunition to the constitutional courts in India for a more vibrant and meaningful interpretation of human rights, laying more emphasis on our cultural ethos and heritage. Our chief guest on this Indian Constitution Day is Honorable Justice Shashikanta Mishra, who is a judge at the Odisha High Court. He holds a master's degree in economics and a degree in law. He started his practice as an advocate in the High Court in 1996. He dealt with labor, insurance, company, consumer, cooperative, and writ matters appearing before the High Court and various courts and tribunals across the country. He was directly recruited in the cadre of district judge in the year 2009. Before being elevated as judge of the High Court of Odisha, he has served as ADJ Baleswar, Rairangpur, District Judge Angul, these are to name a few, Member Secretary State Legal Service Authority, Chairman of Sales Tax Tribunal, Principal Secretary, Law Department. He's a bilingual writer. His first book, Kriya Yoga, was published in 2003.
He's the author of 2 Odia short stories, Bula Kukura and Mati Mohaka. My now request Honorable Justice Mishra to kindly share his views on right to happiness. Namaskar and good afternoon to everybody. Sri Sanjeev Kumar Mahanti, the founder of Odisha Positive, Dr. Giri, who actually had me spellbound by his discourse just now, and Madam Namrata Chadha. My association with Madam Chadha goes back in years. We have done quite a lot of work together. So she is not new to me. But Dr. Giri is certainly new to me, though he hails from Rairangpur, where I was additional district judge, and very recently I had also visited. I have a very unique sort of a relationship with Rairangpur. Even though I was there for 8 months only, one of the senior lawyers, when I visited, he said, while introducing me, he said, "Sir, you were not here with us for 8 months only. You were as if you were with us for 8 years." That is the kind of relationship that I have with Rairangpur. Because it's a place, where you find majority of the tribal population. I had the unique opportunity of, presiding over a court where witnesses would come and depose in Santali language. So there has to be an interpreter. You have to rely upon that interpreter. So he'll give a certificate that whatever I have translated is correct. So anyway, that's besides the point. Now, one thing that struck my mind as I entered, when Mr. Mahanti said that, "Sir, I'm Odia tu achi, ame Odia ko bhal pautwa," which is not very surprising because se nije Odia ko bhal paibata kichi आश्चर्य हला भलिया कथा नुहे किंतु मु आपनको कहबी आपण यू आर ओडिशा पॉजिटिव but actually what your work is positive Odisha. What you are doing is positive Odisha, not Odisha positive only. It may be your name, but apan mankar jaha mu jo profile apan deichin mu jaha padili ebong jaha apan manko to sunili, whatever I have heard sitting here, the kind of work that you are doing to popularize Odias at every level across the globe is commendable indeed. So thank you for doing that. And first of all, I must say that you have chosen this day, this Constitution Day, and you have, you have just not, it's not a program which is intended to, do only lip service to the, hallowed ideals of Constitution every day, every year, in and year after we do it. No, you said something very important. You said Constitution, Sambidhanara Sachetanata, this consciousness about our Constitution, which is very, very important, and you have really touched a very important point. Here, many children are here, and also our friends from the bar and other important dignitaries are present here. I would all request you, since we were talking about the Constituent Assembly, Madam had also referred to, and Madam Smriti Madam had also referred to in her speech, that Constituent Assembly. Now, if I may ask anybody, Constituent Assembly, ta apan mane samte jani thibe? Can you tell me how many Odias were present there? Kete jon Odia kar na सब कहतु समते कहि परिबे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे जो कॉन्स्टिट्यूशन लेखा हेतिबा जो हमर जो माने थिले इवन इंक्लूडिंग द ड्राफ्टिंग कमिटी आल्सो को मा ओडिया माने सेता भीतर थिले डू वी नो probably we do not know. So what I will say is देखंतु I will request all of you को माने constituent assembly रा हमर ओडिसा रो मेंबर थिले अंतत you can do one thing, you can visit the Museum of Justice, the High Court जो तैयारी करछंती कटक रे, and it's a place worth visiting. If you have not, you should always visit every. No, I am talking about the children. Apan as you enter, the first thing that you see is a big photograph of the Constituent Assembly, the members of the Constituent Assembly, all of them. Tankar gote bodo photo which we got it from the Parliament. Then beneath it is a page containing the signatures of only those persons who were from Odisha. And we have a replica of the original constitution. So
children, you must visit that place. Why? Because it showcases the growth of judicial system in Odisha. Now coming to the topic, well, I'll start on a slightly negative note. I respectfully disagree with the topic. Your topic is, why, what have you said? Your topic is, why does happiness not find a place in the preamble? Sir, it means, obviously it means that happiness is not there. To that extent, you are correct, because you don't find it in letter. It is not there in so many words. You don't find anywhere written as a right to happiness. It's true. But is it really so? Let us dwell upon it for a moment. Sir, I may be wrong, but this is my personal view, which I would like to place before this august audience. Now, what is happiness? We have had a lot of, deliberations on this topic. And I was fascinated by what Dr. Giri said and what Madam said. If we look at the Hindu philosophy or the let us say the philosophy of this country, happiness, they divide it into three parts, or there are three sources of happiness or three kinds of happiness. Let us say physical, bhautika, mental, manasika, third, adhyatmika, or spiritual. Physical, you all know, you understand what kind of, when we get something agreeable, which is agreeable to our body, to our senses, then we say bhautika ananda, physical, gross. Tara tike subtle level, tara tike sukmantara starare, rela manasika. When we are happy on achieving something, when we are free from worry, anxieties, afflictions, all these things, then we say manasika starare ame khushi. Prathamata la sukha, itaku kuhajaye ananda. Manasikataku ananda kuhajaye. Generally kuhajaye. I have not coined those terms, so this is what we have read from the scriptures. Then the last is spiritual, adhyatmika. Seti atmananda boli kuhajaye. Let's not get into that. That is the ultimate happiness. Or as one of the speakers, I forget who, referred to, bliss, that word bliss, ananda, bliss. Now, but in the present context, we are basically, talking about physical and mental happiness. When we talk of happiness, in the context of the constitution, we are talking of physical and mental happiness. Let us not talk about the spiritual thing. You will all accept that it is a relative concept. It is relative, apekkika. What gives me happiness may not give you, may give you sadness. Let me give you a concrete example. A person, let us say a judicial officer or a government officer, let us say he is posted in Bhubaneswar. Another officer is posted in Malkangiri. Now there is one order is passed by the authority transferring both to each other's places. जे भुवनेश्वर अच्छे मालकानगिरी करागला, जे मालकानगिरी अच्छे भुवनेश्वर कर दिया. The person who is transferred from Malkangiri to Bhubaneswar is happy that I am going to the state capital, isn't he? And the exact opposite. मुझे तो भल काम कली मत मालकानगिरी पठे देले पनिशमेंट. जे मालकानगिरी देखी ना से मैंने भावती पनिशमेंट बोली, मालकानगिरी या कोरापुट थरे देखीदे जापर जे एटा पनिशमेंट नुहे, इंद्रभुवन. Yes. So the same order passed by the authority gives two different feelings. Happiness to one, unhappiness to the other. So it's a relative concept. Now, I am reminded again, Madam को देखला पर मोर मने पड़ला बुद्धों को कथा मने पड़ला. सार भी कहले बुद्धों को विषय तेनु मु भी टिके I am a great I will not say follower, but I am a great admirer of Lord Buddha. Madam knows it, and she is translating my book. I did not want to say it, but Madam told. I am grateful to her, in fact. Buddha thare kon kale, some of his disciples told him, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା, ଏତେ ଉପାଦେୟ କଥା ଆମକୁ ତ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଆପଣ ଏଇ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତେ କେତେ ଭଲ ହେବ, ସଂସାରର କେତେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସମାଜର କେତେ ଉନ୍ନତି ହେବ. ବୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର. ସେ 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାଛିଲେ, 5 disciples. He said, you go to the nearby, let us say the nearby village, catch hold of 5 persons, ask them one question: what is it that will give you the greatest happiness in your life?
କେଉଁ ଜିନିଷଟା ପାଇଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁଠାରୁ ଜୀବନରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି କହିପାରିବେ? ହଲେଟ୍ ସେ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଖୁସି ହେବେ? ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ୟୁ ଦି ହ୍ୟାପିଏଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ? ସେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଜମି ଜମା ମୋର ଜମିଟାକୁ ଆମର ପୈତୃକ ଜମିକୁ ଆମର ସେ ନେବର ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ କେସ୍ ଚାଲିଛି ମୋ ଜମିଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ପାଇଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଖୁସିରେ ମରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା କନ୍ୟା ମୋ ଘରେ ରହିଯାଇଛି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲିଣି ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର କରିପାରୁନି ଝିଅଟି ମୋର ବାହା ହେଇଗଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସରିଗଲା ମୁଁ ବଡ଼ ଖୁସିରେ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ 5 ଜଣ 5 ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ। ସେ ଫେରିଲେ ବୁଧ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଶୁଣିବା କଥା କିଏ କହିଲେ? ନା ଆଜ୍ଞା କେହି କହିଲେନି। ନା ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା ହ୍ୟାପିନେସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ନୁହେଁ ଆମ କଥା ଗୁଡ଼ା ଅଲୋଡ଼ା ହେ ଅଲୋଡ଼ା ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଇଟ୍ ସୋ ୟୁ କାଣ୍ଟ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଇଟ୍ ଅପନ୍ ଦେମ୍ ଯେ ଏଇଟା ତୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଚକୋଲେଟ୍ ପିଲାକୁ ଦେଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ମୋ ମୁହଁରେ ମାଟି ଦେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ମୋ ମୁହଁରେ ପାନ ଖଣ୍ଡ ଦେଲେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ। ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ପାନ ଖାଇନି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କହିଲି। Same reaction, addiction विषय कहते Dr. Giri, he understands. My dentist once told me, why there is a craving in you to have that pano? प्रथम कथा ओडिया ओडिया तोटा अच्छे ना ओडिया तो मैंने पान से कहले ब्लड कौन प्लाज्मा रे से जिनसटा जेहेतु हो जाइए मुझे बुझीपारे कहले से अच्छे से आपको ब्रेन को जाऊँगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाऊँगी तेणु आप सागे सागे पकेट फकेट खोजिले कौट अच्छे पानटा खंडे केमती खाईदेवी कि मत जो गोटे आज्ञा पान मुझे खोजला मतलब गोटे 5 स्टार चॉकलेट दब आज्ञा खुशी हेबी ना चटपटे पकेबी ठीक से सो हैप्पीनेस कौट आसला आज्ञा मो हैप्पीनेसटा मो कथा मु कहबी ना मत आज्ञा मत आउ जने किए कहबो इट्स अ प्योरली सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट सर एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मु आज्ञा क्रिकेट खेल देखा मु इंटरेस्टेड अच्छी मत आज्ञा डॉक्टर गिरी आसिक से स्टेम सेल देखेबे हाँ अक्टोबर 19 तारीख दिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच मु मोर सब काम सारी देछि से दिन देखी बोली सत कथा मु खोली कहूँ किसी मना नहीं बहुत लोग कर पूर्व आई टुक पेन आई सैट टिल 1 o'clock in the night in the morning rather I also asked my secretary to I have 4 secretaries so 4 of them they sat because they were correcting busy correcting judgments I had to deliver judgments so 19 तारीख दिन मु खेल देखी बोली कहली से समय मत डॉक्टर गिरी मो पाक आसी कहते हैं आगे आगे बढ़िया रखी आपंकर जो आपंकर जो हाँ ताकू उठापी मु आज्ञा मदस्त करची आपको बड़ा खुशी दब आज्ञा मु कौन करता आज्ञा डोंट माइंड मैंने नॉट सो आज्ञा इट वैरीज देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी हियर सर इट्स एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव it's an individualistic connotation what is happy what gives me happiness as I said in the beginning may not give you the same happiness or may not give you the same feeling. I think I think you must I think Mr. Mahanti obviously must have followed Bhutan's example. Bhutan was the first country which talked about happiness and gross national happiness index. They have 9 parameters of which there are 33 indicators. No, what they do, I think it was their 4th king, Jigme Singye Wangchuk, in the 1970s. He was the first person who coined this term, Gross National Happiness Index. And he said, this is more important than Gross National Product, GNP. GNP, when we talk of happiness, even today, say, deso develop kala ki nahi, ame kon dekhuche? We are looking at the economic side, socio-economic side basically, not less social, more economic. Se country per capita, se jagar per capita income kete, gross national product kete. We talk in economic terms. But sir, happiness doesn't depend only on economics. As madam gave the example of a rickshaw puller, I will give you an example. When I was a lawyer, I had gone to a place. I returned very late in the night, so I hired a rickshaw in Natak. As I was coming, the rickshaw puller was singing very loudly, even though I was on the seat, and it was very apparent that he was in a very, that spiritual mood. Spiritual. So you understand?
So I said, I told him, बड़ा खुशी अच्छा जी ना आज्ञा बहुत खुशी बोले कौन मैंने कहा आज्ञा आपको छाड़बी घर को फेरबी पखाड़ खाइबी नई बाली देखुंती से जाए शोबी तापर आउ गोटे भी कथा कहला मु मझे ये कामटा भी करबी तापर शोबी आज्ञा ये जो केयर फ्री अप्रोच जो absolute giving a damn to the world, this gives him happiness, and this happiness cannot be compared with the happiness of, let us say, Mukesh Ambani. So again, we don't know where we are. That is what the Bhutan came out with it's a very innovative concept. It has caught the imagination of the rest of the world. And what do they say? They include not only the economic indicators like standard of living, health, education. They also go to the non-traditional parameters like the psychological well-being, the society's members, how they interact with each other. All these things they have devised a formula. They measure the happiness like that. Even though happiness cannot be measured, the kind of happiness that we are talking about, it cannot be measured. But they have, devised a sort of a, what should I say, a parameter to measure what they call is happiness. And this is what is, according to them, is the development of their nation. Now, coming back to our topic. As Smriti madam said at the very beginning, Constitution is the mother of all laws. It is the organic law. It is the fundamental. It is the basic. Any law that you make has to conform to the principles of the Constitution. Otherwise, it will be struck down by the courts as unconstitutional or ultra vires the Constitution. So, Constitution is supreme. You cannot go beyond the Constitution. Now, if we go to the Constitution per se, we just carry on the book. There are 395 articles, so and so, a lot of schedules. The whole body, it's a voluminous, it's one of the longest written constitution of the world. But the door to it may be a big room, but the door, there is one single door, and that door is the preamble. You have to enter into the Constitution through that door. And in legal terms, we tell ourselves and our peers, our colleagues, our juniors, our seniors, everybody, that you need a good and thorough understanding of the preamble in order to be able to understand the articles of the Constitution. Your understanding of the Constitution depends on your understanding of the preamble. If there is somewhere, mismatch, then your understanding goes of the Constitution as a whole. As I have already said, sir, I have a bit of reservation with regard to the topic. I respectfully disagree. I am not saying that we should not have happiness. What I would like to say is that we already have. We already have happiness ingrained in the Constitution. Asti and majja gatto hi ke rahichi Constitution bhitere happiness boli concept. You cannot say that it is not there. Yes, it is not explicit. It is not in black and white. It is not in printed form. It is not in letter. But the spirit is there. How? I will make a humble endeavor to show. In fact, I'll go to the extent of saying that the happiness that we were talking about, or we are thinking, subconsciously thinking, is the bedrock, is the foundation on which the entire Constitution, the edifice of the Constitution stands. You cannot think of Constitution, without thinking of happiness. So it is already there. If you read between the lines, you will find happiness lurking around the corner as being the ultimate goal to be achieved by the Constitution. It is the ultimate goal to be achieved. So how can we say that it is not there? Kaun pai kara jaichi subu? Kaun pai kara jaichi? Let us see how. Now I have, for our understanding, anybody who is a student of law will know about a very celebrated decision of the Supreme Court of India, Kesavananda Bharati. I will just read 3 lines, not 3 lines, 2 lines particularly. So, when preamble visare kon କହିଛନ୍ତି Supreme Court. It's a very long judgment. We shall first deal with the preamble in our Constitution. The Constitution makers gave to the preamble the pride of place. Very clearly understandable. Preamble is the most important thing. It gives you the essence of the Constitution.
it embodied in a solemn form, this is important, all the ideals and aspirations for which the country had struggled during the British regime, and a constitution was sought to be enacted in accordance with the genius of the Indian people. Very important words. Very, very important words. तो आमर जो फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल पाई जो आइडियल्स, जो आमर जो जो आदर्श को पाथेय करी आमर मुवमेंट करथिले महात्मा गांधी बा एवं तांको लीडरशिप रे अन्य माने, these ideals, these philosophy is in a condensed form to be found in the preamble of the constitution. That is what the Supreme Court says. And 13 judge bench, 13 जन जज बेसिक कहते. So let us see, let us find out. अच्छा आपन जदि हमर आइडियल्स कथा कहिबे कॉन्स्टिट्यूशन रो हम कंट्री रो, महात्मा गांधी कोन अहिंसा, महात्मा गांधी नेवर कॉइन्ड दैट टर्म. महात्मा गांधी बाहर करना, सत्य महात्मा गांधी बाहर करना, धर्म बाहर करना. आम कंट्री रे सिविलाइजेशन रो अछि. It is there in our civilization. You turn any page of the scripture, you will find it. I will recite a mantra which all of you may be knowing. जा घरे पूजा करते हो, पूजा सारला पर ब्राह्मण को कहबो, स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महिम महिषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. I will translate it. They are in fact praying for the welfare of the king. What kind of a king? Not all kings, not all dictators. A dictator is not entitled to such a prayer. What are they saying? Semane kouchanti, let good things happen to the ruler of people or the king of the country. What kind of a king? The one who rules over who looks after the welfare of his people by treading the path of justice. Nyayena margena mahing mahisha. By treading the path of justice, rule of law, madam said. It is only by treading the path of justice that you can really look after your people. Go brahmanebhyo shubhamastu nityam, where the material and intellectual resources of the country are well protected. Lokah samasta sukhino bhavantu. May the people, all people, be happy. Now, from there probably we have the concept of maximum welfare to the maximum people. This is a very salutary, sort of a ideal to be followed. This is there in our psyche, It is there in our culture, in our ethos. It is ingrained. So it is not as if we need it from somewhere outside. Then I have, for the benefit of our young friends here, actually all of you must be knowing about Emperor Ashoka. Emperor Ashoka, it is said, he had a very big war, fought a very big war with the people of Kalinga. He defeated them, so and so, so and so. 1 lakh people died and overnight he turned. 1 lakh प्रथम कथा से population थिले कि ना देखिया पड़िबो. Second thing है खाली कलिंग लोकोटा मरी गले से मानकर के मरलेनी. Third कथा है जदि कलिंग एते दुर्बल थिला ताले तांको जेजापा जे even more powerful Chandragupta Maurya, why couldn't he even look at Kalinga? So these are all different aspects of history which we let's not get into that. But धौली रे गोटे अच्छी रॉक एडिक्ट 2000 वर्ष अशोक समय एवं भी अच्छी आपण मैंने देखिपारे से खोदित होगी लिखाई जो से समय जो अर्धप्राकृत मगधी लैंग्वेज लिखाई अच्छी मुझे पूराटा पढ़ी खाली 2 लाइन पढ़ी से विभिन्न कथा कहते जो जुडिशियल अफिसर्स ऑफ द सिटी कहते केमी तुम शासन कर इत्यादि इत्यादि भर से गोटे लाइन कहले ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन as on behalf of my own children I desire माने अशोक निजे कहते I desire that they may be provided with complete welfare and happiness in this world and in the other world the same I desire also on behalf of all men. So here the emperor, he also desires maximum welfare for the maximum number of people that he is ruling over. Same principle that this country is proud of. 2000 वर्ष तलर कथा मु कहूनी लिखाई
ତା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କେବଳ ପଢ଼ିଲି. So to say that these ideals are not there in the constitution already, probably I don't think it will be very, very correct. Let us see what is there in the preamble. Let us read for a moment. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ये चली गला. ये democracy, ये जो republic विषय चली गला. कौन पे? And to secure to all its citizens. These are the goals. What are the goals? Justice, social, economic, political. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Equality of status and of opportunity. And to promote among them all what? Fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Now I'll just very, very, very briefly touch upon these aspects and then I'll close. I believe we are getting late. Well, justice, social, economic, political. Madam raised a very important point about our Safai Karmachari. We come to this, hallowed gathering of people, august audience. I stand on this rostrum. I make a very big and a very beautiful speech on constitutional values. But back home, I do not allow the Safai Karmachari to enter. Hey, right. Yes. Acharana Ucharana, Bitare Probed. But the constitution takes care of it. Tomorrow, if the same man goes to the knocks the door of the court and says that, sir, I am being discriminated, the court will come forward. No, you cannot discriminate this man because he is entitled to social justice. Economic justice, political justice, we all know. Let us not get into those. Liberty, liberty of thought, expression, belief. Liberty is in fact, is the most cherished concepts. I will give you a very brief example. I was a district judge of particular place. One of my magistrates, he was a, like we say, gun happy, trigger happy policeman. He was a very, jail happy magistrate. Jo bail padi usi reject kari bharti kar do. So he doesn't go to jails, but a district judge has to go to and inspect the jails. So I go to the jail, I see the condition of the people there. Young tribal women, can't even speak properly. They are lodged in jail for petty offences, nothing. कि हांडिया रंतला तक पानी भर्ती कर दी सी जानी किसी करने 20 दिन 25 दिन सी जेल अच्छी मुझे कहली मुझे तुम गोटे काम कर से मैजिस्ट्रेट को कहली मुझे यू डू वन थिंग यू लॉक योरसेल्फ इन वन रूम एंड डोंट कम आउट ऑफ दैट रूम लॉक योरसेल्फ 24 आवर्स तापर हम तो फोन करूँ ऑफ कोर्स ही डिडंट डू दैट आई डिडंट आल्सो वांट हिम टू डू दैट एग्जैक्ट बट आई आस्क्ड हिम टू इमेजिन योरसेल्फ यू नो व्हाट इज लिबर्टी यू आर डीलिंग विथ लिबर्टी बी केयरफुल यस he is an offender. Whatever the law demands. If the law demands that he should be imprisoned, he should be imprisoned. Doesn't matter. But this is where we have to be careful because we are dealing with liberty. And who gives us that? The preamble gives us that. The constitution gives us that. Then equality. Again, equality, all of you understand. I need not, dwell upon it. But there's a thing called fraternity. It is not spoken very much. I'm reading a book. You Must Know Your Constitution by Fali Nariman. So there he has just one paragraph. Fraternity has been added by the drafting committee of the Constitution. In the preamble, since the need for fraternal concord and goodwill was never greater than now, the humanitarian concept had its origin. This is a humanitarian concept, fraternity. Had its origin in Article 1 of the UN Declaration of Human Rights of 1948, to which the Sovereign Republic of India had subscribed and to which India was also a signatory. What is that article? Article 1 of that? It says, all human beings are born free and equal in dignity and rights. So born free, equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Yes, what Madam said, I am reminded, and what Smriti Madam also said. I am aware of my freedom, my dignity, my rights. Equally, in the same measure, I should respect the freedom, the dignity, and the rights of the other person who is standing in front of me. This is brotherhood.
This is fraternity. And again, this what basically we are talking about is a peaceful mutual coexistence. This is kind of the society, this is a kind of society that the constitution has envisaged. And this is there in the preamble. So we have to read between the lines. We have to read underneath the underlying, philosophy. And I'll show you, since we have talked about also the directive principles of state policy, I will only refer to only two articles, Article 38 and 39. Article 38 says, state to secure a social order for the promotion of welfare of the people. Lokah samasta sukhino bhavantu. ଲେଖା ହେଇଛି ଇଂଲିଶରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ସେୟା ମୋତେ ସେୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ does it the meaning ଟା ସେୟା ହେଉନି state to secure a social order for the promotion of welfare of the people ମୁଁ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟା ପଢ଼ିଥିଲି the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of national life. तापरे inequalities केमती reduce करा जिवो कोन करा जिवो से सब कथा कोआ जाई छी. So the same principle. And 39 re certain principles of policy to be followed by the state. It talks about equality, how the material resources are to be say go brahmane vyo shubhamastu nityam, how the intellectual and material resources of the country are to be distributed among all, so that yes, everybody, there is not equidistribution of income. There is no wealth being concentrated in the hands of few is something that we should avoid, and this is all there in the constitution. This is what will give us happiness. Loka samasta sukhino bhavantu. I keep on repeating this. This is the goal of the constitution. Lokamanakar sukha, welfare ru to happiness. I mean, it is personal happiness kotha kohune. Personal happiness for example mu prathame deli. Now au dita khali example deki bond karbi. Arjun Mahabharata yudh samare Arjuna and Karna, it's just a legend. I don't know whether it is actually happened or not. Now when they were at the height of their war, Karna's wheel, the wheel of his chariot, his charioteer was killed. He was himself driving the chariot and his wheel got stuck in mud. से ओल्हेकी से चकको कादुअरु बाहर करिया चेष्टा करथिले अर्जुन तांको मारिया बोली चेष्टा करथिले अटकी गले से तो माने निरस्त्र अवस्था नछंती श्रीकृष्ण कहले तांको मारो से अर्जुन कहले आज्ञा से तो अस्त्र छाड़ दी मु जणे आज्ञा क्षत्रिय मु जणे महारथी मु केमती एभला अन्याय काम करबी श्रीकृष्ण कहले ता माने मु जो गीताटा बुझीथि सब किछि बुझी पालन तमे किछि तुम बुझिन कि तुम सेमिति तुम जो भावुच मनर गर्व अच्छे तुम तक मारद बोली तुम मारिपार सी धरले जो तुमको मारदेव सीटा मन भूली जा तुम बड़ महारथी होता पार कि तुमको मारदेव बट आई एम नॉट आस्किंग यू टू फाइट अ पर्सनल बैटल सर आई एम लुकिंग एट द कॉमन गुड द कलेक्टिव वेलफेयर एंड फॉर द एंड्स ऑफ द कलेक्टिव वेलफेयर दिस मैन नीड्स टू बी किल्ड किल हिम सो अगेन हैप्पीनेस रूल ऑफ लॉ morality it's very complicated. It depends on from which point of reference you are saying. A person commits a murder. Now the victim or his family, they cry for justice. They knock the doors of the court. The man is arrested. The man is tried. He is convicted and he is sentenced to death. What happens to that man? आज्ञा मत मारदेवे आपण ताको आमे कहबे हां तू मारथिलु तू भोगिबु सो तार मेंटल स्टेट और यांकर मेंटल स्टेट विक्टिम बा डिपेंडेंट मान करो सी कहे वी आर हैप्पी दैट जस्टिस हैज बीन डन सी कहे आज्ञा मु भूल करछि तथापि आज्ञा मो जीवन जाउछि से कोन खुशी रे जीवो से बेले मर्डरर बीइंग हैंग्ड अ कन्विक्ट ऑफ अ क्राइम बीइंग इम्प्रिजन्ड से भूल करथांतु सो हैप्पीनेस कहला बेलको आमे जते बेले कहूचे वी मस्ट लुक एट द कलेक्टिव वी cannot dwell only upon the subjective part. Even if we do, it will be very difficult to measure because it keeps on changing from person to person. So whether happiness, right to happiness, or in whatever way you call it, whether it has to be brought into the statute, the constitution in black and white in so many words, well, is a matter for the legislature. I leave it to the wisdom of the legislature to decide. But
To say that it is not there in the constitution, well, I will very humbly disagree. I will say that it is very much there in the constitution, though not explicitly, it is there implicitly, in an implied manner. We must learn to read the constitution between the lines to find out the subtle meaning of each and every single word. For want of time, I have stopped midway almost, because these are words: liberty, fraternity, equality. Hundreds of meanings can be ascribed. As Mr. Mahanti will know, Article 21 is an ever-growing, interpretative tool. Anyway, this is my humble view. I leave it to the august audience to decide. Thank you, sir, for giving me this wonderful opportunity of again reminding myself of the great principles, the lofty ideals that has made the civilization of this country so respected by others, to remind myself of that I am a child of this land. Thank you very much. Jai Jagannath. Thank you so much, sir, for explaining us about relative happiness, that what makes you happy, I may not be happy with that. I have to go and tell my husband that we have our own lines, so this may be your happiness, this is mine. And that happiness is subjective and cannot be measured. I'll come to you, ma'am. We are running short of time. I'll surely come to you. Would request Sanjay Bhai, the founder of Odisha Positive, to give a token of love and gratitude to our guests. We, as you say, not I, we. So I invite Sujata Chaudhary ma'am, Sushant Sarangi, brother Sushant Sarangi, brother Sampati Basant. Please come. And Sujata Chaudhary ma'am will honor Namrata ma'am, and Sampati Basant brother will come, all of you come. ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବ୍ରଦର, ଆପଣ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ତମେ ସୁଭାଶିଷକୁ କରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୋକନ୍ ଅଫ୍ Thank you. Thank you all. I would now request Advocate Siddharth Das to kindly give the vote of thanks. बेंजामिन फ्रैंकलिन गोटे स्टेटमेंट कही शेष में से गोटे स्टेटमेंट आपण सामने रखा चाहूँगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली गिव्स द पीपल द राइट टू परस्यू हैप्पीनेस, यू हैव टू कैच इट योरसेल्फ। तो ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। ऑन बिहाफ ऑफ ओडिशा पॉजिटिव, I am glad to be standing here to express my vote of thanks. I submit our special thanks to Honorable Justice S. Misra for giving his precious time and requesting and accepting our request to be here. से तांकर उद्बोधन द्वारा वेद ठू आरंभ करी कॉन्स्टिट्यूशन उपरे बहुत सारगर्भ तत्व आम आखरे परिवेषण करिसेंती। Really, we are indebted to you, sir. And we are also thankful to Madam Chadda, Dr. Giri, so also Sanjeev Bhai, for arranging the gatherings. Sanjeev Bhai has took much pain to travel from Delhi to Bhubaneswar
Preeti ma'am also coordinated everything. Our also thanks to the media people to the August gathering here. It was a very pleasant moment to be part of this gathering. Jai Jagannath. Thanks to all. I will just brother Siddharth add ମୁଁ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଭବନର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଆମର ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ କହୁନା କୌଣସି ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ହ୍ୟାମଲେଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଫରଗେଟ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ଡେନମାର୍କ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ସୁକୁମାର ଦାସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏ ଶୋ ପସିବୁଲ୍ ହେଲା ତାରି ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ସାହସ ଦେଲା उत्साह देला उद्दीपना देला आज शो जो भी इवेंट है एटा सचेतनता दिवस तापाई से सबू अरेंजमेंट से करची मु गोटे गेस्ट भाई आज्ञा आसी सिद्धार्थ मु किसी पेन नहीं मो ससुर घर झांझरी मंगला आ कटक चंडी मो घरे ही अच्छा तेणु मु मोर स्त्री को भी धन्यवाद देवी से टिके असुविधा अच्छी माने मो ससुरंकर आज वर्षिकिया सेठी टिके वैकुंठ चतुर्दशी सेठी मु जाई पारलिनी एटारे अटेंड करिया को पड़ला जेहेतु मु ऑर्गेनाइज करछि तापरे जीवी काली बाली यात्रा अछि तन कहछि मु जीवी आज्ञा तेणु So as we conclude today's symposium, let's chant the Shanti mantra for happiness and well-being of all. Can we start the Shanti mantra, please? Thank you. Thank you to the august audience, my media friends. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhaveet. Asato ma Gamaya Tamaso ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. May everyone be happy. May everyone be free from all diseases. May everyone see goodness and auspiciousness in everything. May none be unhappy or distressed. Om Shanti Shanti Shanti. Namaskar.